Display, one that makes us extremely proud today as we celebrate our 74th Republic Day. Oh, absolutely. You know, ceremony and celebrations, livery and finery, everything there together. And of course, the ceremonials. Major, my good takeaways, the extraordinary representation of women in leadership role in the armed forces that was sort of showcased in that parade. And of course, the LCH Prachand, I thought, makes us proud. Your two takeaways, Major, on this Republic Day from this March past. Absolutely. Thank you, Abhishek. And my two takeaways are this: Atmanirbhar Bharat. So Prachand is an indigenous platform. And this year we've had, and last year we've had a lot of wins in terms of INS Vikrant and other platforms also. So major. Second thing is the invitation of the Egyptian President Al-Sisi. And this speaks about what Prime Minister Modi wants to do in the G20. This speaks about his vision for the global south. Yeah. And saying that we will become the voice for those who are voiceless. India will lead countries, and India will represent those countries on the high table, countries that do not have that kind of diplomatic heft. Absolutely. And the diplomatic reach. So I think it's a huge success for India. Oh, absolutely. We soak in those visuals, and we are going to do that all day. Nupur, you know, let's begin with our Proud to be Indian segment. If you can introduce the guests and take it forward from here. Nupur. Yes, absolutely. So this is a special broadcast called Proud to be Indian, and we begin with India's blind cricket team, who have made history after winning 3 international championships back-to-back against all odds. India's blind cricket team has overcome all odds. Despite struggles and limitations, the team has been formidable and has given outstanding performances. In 2012, they won the first T20 World Cup in Bengaluru. In 2014, they won the ODI World Cup in Cape Town. In 2017, India defeated Pakistan in the T20 World Cup. In 2018, India again defeated Pakistan in the final of the ODI World Cup Championship at Sharjah in the UAE. There we go! India, the champion! And in a record-breaking feat, India defeated Bangladesh in 2022, winning the third T20 World Cup. Raise up to glory. That is the celebration you want to see as an Indian supporter. We'll be really happy. The Indian blind cricket team is the only team in the world that has won the T20, ODI and Asian Championship Cups. And this winning streak is bound to continue. India salutes the national blind cricket team on this Republic Day. Only the lone fighter in the match. India. And we are absolutely indebted to these wonderful men who are joining us on the broadcast. Dr. Mahantesh Ji, he's the president of the Cricket Association for the Blind in India. He's joining us live from Bengaluru. Thank you. Sonu Golkar, he's a player. He's joining us from Bhopal. We've also got Ajay Kumar Reddy, the captain from Bangalore, Karnataka. Sunil Ramesh, another player joining us from Chikmagalur in Karnataka. And A. Ravi, another player joining us from Visakhapatnam in Andhra Pradesh. Gentlemen, thank you so much for being here and for taking out the time to speak to us and take us through your journey. If I could just begin with Ajay Kumar Reddy. You know, we were just watching what this incredible team has done, and who can forget the World Cup of 22 against Bangladesh. Everybody was in tears when you won it. Take us through how that moment felt for you. See, first of all, thank you so much for this live to introduce the world, especially for India, about our achievement. Coming towards this achievement, being a player, being a captain, I am really happy with my performance and my team performance. Not only one time, continuously thrice we won championship. Not even any mainstream cricket also they are not achieved this feat. We did, being an Indian, really proud for this achievement. Entire my boys, they put everything
to reach this level. I want to thanks to my each and every player and management also. See, the thing is that, actually once we enter inside the ground, we never think about our difficulties. We always think about, like what we can do something for country, how we can make country proud. That kind of thoughts, make us more involved, make us more commitment, make us, like more success in this field. Yeah, if I could ask the captain, Ajay Kumar Reddy, 3 World Cup victories, consecutive victories, and I'm surprised that the kind of media attention the other sports get, the other cricket teams get, like the men's cricket team and the women's cricket team. Are you not little unhappy and angry that that kind of attention does not come to your achievements? Yes, to be honest, we are not happy because other sports, they are getting many things. We are not getting, after, winning the tournament in the presentation ceremony only, I mentioned one thing. Treat us like sports person. Don't treat, like sympathetic way. Like blind cricket, they just, people they are listening that blind word, because of that only we are, our talent is ignoring what we are doing for country, that they should consider. Sports is sports. Like, different situation with difficulties we are playing, but each and every person should treat us like sports person, how they are treating like regular sports person. We are not less than anyone. We are equal to everyone. We are also carrying India flag. We are also wearing, India name jersey. We are not playing for our own name. We are playing for India. We should get that kind of recognition. That's why only I express my feelings in the presentation. At the same time, we are not happy with this big achievement. Entire India should support us. This is not, one-time achievement. We want thrice. Yeah. If regular cricket team, if they achieve like this, just imagine what level media and corporates, everyone they will treat, they will receive them. But being a visually impaired, because of the blind name, society at the same time, corporates and media also were not received that much of support and receiving. Major Gaurav Arya, if you have question for any one of these participants, tremendous achievement there, but perhaps not enough recognition. Major. Yes, absolutely. Thank you, Abhishek. And my question is to Dr. G.K. Mahantesh. Dr. Saab, my question is that, first of all, I'd like to, I don't know, but express regret or apologize because I didn't know. And, that is something that we all need to look inwards and say that, why don't we know? We have such a fantastic team, and I think this is something missing from our part, actually. So, apologies. My question to you, sir, is, do you have the same problems of sponsors and corporates coming to your help? Because the skipper there did mention that you don't get the kind of sponsorship that you'd like. Now, I hope after this program things improve because the entire India is watching this program. But I'd like to ask you, you have problems with the government support, you have problems with sponsors, sir? Absolutely, sir. Hi, everybody. Let me wish everyone a very happy Republic Day. And I would like to thank Republic TV for having us. Yes, for the last 10, 12 years, ever since we took over the management of Cricket for the Blind, our boys have made India proud again and again. But our struggle for getting sponsorship, our struggle for getting regular support from government, our support
from BCCI is not at all happening, sir. It's very, very strange. Causes like ours, support should have just come overflowing. Hopefully, after people see this telecast, government, BCCI, and sponsors will come forward so that I need not run from pillar to post every time when we want to host an event like this, when we want to get support for our visually impaired cricketers, both men and women also we have started. Because we are a cricket crazy nation, a lot of money is spent for cricket. So even a smallest portion is given to blind cricket. I think our visually impaired cricketers will get best of the facilities. Oh yes, absolutely. Dr. Can you Mahantesh. share some experiences of the struggles that you have faced? Nupur, yes, go ahead. I was actually asking that question to Sonu Golkar. Sonu Golkar, obviously it's not been an easy journey and it's been as tough as it can get. So share with us how your experience was and how was the feeling when you were actually able to reach the summit of this? Of course, first of all, many happy Republic Day to all the people of our country as well as the people of world. Yeah, definitely, it's amazing feeling when you represent your country and when you win the World Cup. That experience and feeling you can't explain in your words. But despite our President and Ajay Bhai mentioned that it is not an easy task for all of us to achieve this goal and vision and mission. When we play for our country, then Ajay mentioned that we don't think about our challenges and difficulties which we faced during the when we started playing cricket. Even not like I already mentioned that we don't have regular support, financial support, sponsors, even we sometimes it happens that we don't get ground for the practice and we don't get kits and all. So these are the difficulties we are facing. But the thing is, what challenges we are facing, that our board always ensure that you don't focus on your challenges, whatever problems you are facing, that we will take care, and whatever support we require, that our board ensure that will get it. But we know that pain, how they are running here and there and getting a sponsorship, getting support for us, that we know. So her whatever it is, credit goes to our management and entire Kabi Samarthanam. They are working hard for the success, but time has come. Even I'll tell you, Nupur, when we won the World Cup in 2018, same date we came to Republic Bharat. From that 2018 to 2023, nothing has been changed. Whenever we win the World Cup, we hope that things will change and support will come, because there are many players who doesn't have jobs. They are still struggling for their financial status not good. So time has come to change whatever country want, what the cups and all which we have achieved. So, but now the time has come to recognize our achievements, and people should not look at on the basis of our disability. They have to identify our ability, and like other sports person, we have to get support. Yeah. Yeah, and if I may share some of my hardships. All right, let me. When we go for, yeah. Should I? Continue. Please continue. Please finish your. Finish your. Yeah. So, Rishab and Abhishekji and Nupurji, there have been continuous challenges. Every time we want to organize something, we need to go and approach people. Thanks to few companies who have been supporting us for the last 5-6 years, especially IndusInd Bank, who owns our Indian team kind of. But when it comes to sponsorship, it's a big challenge. If you just see this World Cup, we had no title sponsorship. That itself is a very clear indicative. And government also, every time we have to go and ask. Fortunately, Karnataka government has been very supportive, government of India too. But every time going and asking makes me very, very embarrassed.
every time you meet new officers, if there is no clear structure, no clear system, every time I have to go and beg honestly. So that's what I have requested our Honorable Sports Minister Shri Anurag Thakurji to give us a recognition so that I need not run behind new officers. Give us a recognition so that our players get the due recognition, due support. They can apply for awards, they can get cash prizes, and even when we organize tournaments, some money will be assured. Same plea I am doing it to BCCI too, but somehow it is not being heard, it's not being happening. I don't know how long I should be waiting, I don't know how long I will have this energy, just because of my own personal passion, my own personal mania. I am trying to push this through my friends, through Samarthanam Trust, and through my cabby. I wish this struggle will end soon, and my boys and girls will have an equal recognition, equal support, and my board can focus on the game development rather than running behind the money. Right. Right. Of course, Dr. Mahantesh, the whole idea of getting you here is to make you heard and let people of the country see what tremendous stories of grit and fortitude behind your achievements. We hope seriously and sincerely that your struggles really come to an end and the establishment takes note. Let me take this next question to A. Ravi. He's joining us from Andhra Pradesh. Ravi, your thoughts on Republic Day, your message to the people, and if you would want to share some of your story to inspire youngsters watching you so that they come in the service of the nation. Hi sir, happy Republic Day to all of you. Thank you for inviting us on this media. Definitely we are very happy to show our names in this Republic Day media. Especially today I am very happy to speak in front of you all. Definitely we are very proud to be an Indian. We hope what Ajay Bhai said and Mahantesh sir said, we want recognition from all BCCI and governments, everything. We won 5 World Cups, but still we didn't get any recognition. We are struggling very hard financially and we're unemployed and we don't have any jobs at all. Oh, you have. And our families also, we sacrifice many things for cricket. Still we are playing for our country. Definitely our country will recognize us in future coming days. Thank you, sir. Oh, absolutely. Now I'll to Sunil Ramesh. A very, very happy Republic Day to you, Mr. Sunil Ramesh. And it's a privilege for us to have you on this program. My question to you is, what makes you a proud Indian? What makes you proud to be an Indian? You've held the flag, you've won World Cups, but what really makes you proud to be an Indian? Happy Republic Day. I am very proud for India. And मैंने इंडिया के लिए खेला, मुझे बहुत खुश है और मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेरा कैबी मेरी टीम बहुत अच्छे से सपोर्ट की वेरी प्राउड और इंडिया के लिए हम लोग वर्ल्ड कप जीत लिए थर्ड T20 वर्ल्ड कप कंटिन्यूसली जीत लिया बहुत हैप्पी. Right. Mr. Reddy, Ajay Kumar Reddy, if I could come back to you now. Obviously, it's been a very tough battle. What are your hopes on this Republic Day as we go into another year? What are you hoping will change perhaps from the system as well as from other people? Hello? Your voice is buffering, I'm not getting. Hello? Are you getting me now?
Yes, now I am getting, yes. Okay, I was asking you that as we enter another year of being a republic, what are your hopes in terms of what would you like to see change, and change not just from the system but also change in attitudes of people, of sponsors. What would you wish for today? Yes, true, in this year, at least from society, I am expecting this, the way they treat differently abled people, they should change their mindset. We have physical difficulties only for our body, not for our commitment, not for our mindset. With these difficulties only, we are making country proud. At the same time, we are succeeding in our field. For government or for sponsors, just I want to tell you one thing, don't, look towards us sympathy way, just treat us like regular sports person, recognize our talent, support us. At the same time, you can give like push up to us, we are there, just go ahead, continue your performance, make India proud. Like that, if we support like that, support from corporates or governments, then many players, they can come forward with that young talents. We can do more better, we can play more cricket. Right. Because, already told Ravi, many of the players, they are unemployed. Corporate companies, they can adopt blind cricket, they can provide employment also. Government of India also, they can do it. Because I know how personally, initially I struggled to play cricket. Now situation change. People are aware about blind cricket, but the thing is that we need support financially way. Then youngsters, they can come forward. Many players, they are coming because there is no support, there is no recognition, they are going back. They have talent. They are going back, means that should not happen. That should not be good sign. That's why just I am appealing each and every corporate companies and government, BCCI, just come forward. Support blind cricket in financial way. With that, we can establish good cricket. We can give good future for blind cricketers also. Right, we here at Republic, of course, wish you all the very best, and we hope that your appeal is heard by everybody and that things begin to turn around. Thank you, all of you, for joining us on the broadcast. Dr. G.K. Mahantesh, Sonu Golkar, Ajay Kumar Reddy, Sunil Ramesh and A. Ravi. It was an absolute pleasure to have all of you. Thank you, madam. On behalf of Cricket Association for the Blind in India and Samarthana, and on my behalf of my team, I would like to extend big thanks to Republic TV for having us as part of Proud Indians. We really feel proud to be a part of this film. Thank you very much. All right, you are of course watching our special broadcast, Proud to be Indian, and we'll continue our coverage. We'll have a lot more guests lined up next, so stay with us, don't go anywhere. You're watching Republic. Roundup of how the country is celebrating Republic Day today. As Bihar gears up for the Republic Day, Bihar's Vidhan Sabha in Patna was illuminated with tricolour lights last night. Vidhan Sabha and other government buildings in Jaipur were also illuminated with tricolour lights ahead of Republic Day. In Lucknow, the Vidhan Sabha, Lok Bhavan and Charbagh railway station were illuminated with tricolour light ahead of Republic Day celebrations. Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus and Mantralaya in Mumbai were also lit up with tricoloured light ahead of Republic Day. Even suburban near C-Link and Collector Office were illuminated last night. Kolkata geared up for the 74th Republic Day celebrations as Raj Bhavan was illuminated with tricolour light. National capital geared up for Republic Day celebrations as the Qutub Minar and Supreme Court and other buildings were seen illuminated with tricolour. A band show meanwhile was organised ahead of Republic Day as Rajasthan city was seen illuminated with lights.
A mesmerizing dance performance on the national song was seen at the Delhi airport, setting the mood to celebrate the joy of being a republic. Top headlines at 6:30. The nation marks 74th Republic Day. President Murmu to hoist national flag at 7:30 a.m. Countdown to Republic Day parade. Over 65,000 people to witness Grand Parade at Kartavya Path. Nation salutes its heroes on 74th Republic Day. Stand by for Republic special broadcast at 12 p.m. Largest crew of reporters on ground for the largest coverage on the 74th Republic Day. "106 Padma Awards announced, 6 Padma Vibhushan, 9 Padma Bhushan and 91 Padma Shri Awards. Big move by the United States, announces to provide 41 Abrams tanks to Ukraine. Top headlines at 6:30. The nation marks 74th Republic Day. President Murmu to hoist national flag at 7:30 a.m. Countdown to Republic Day parade. Over 65,000 people to witness Grand Parade at Kartavya Path. Nation salutes its heroes on 74th Republic Day. Stand by for Republic special broadcast. Welcome back. You're with us here. This is our non-stop rolling coverage, also a special one. As we again say good afternoon to our panel of guests. Abhishek, Major Gauravarya with us here in our studios, and do remember this Republic Day. And in fact, Abhishek and Gauravarya, you'll recall almost on all Republic Days, this is a ritual for us that we bring together stories, we bring together newsmakers, we bring together individuals who've made a mark in their own stride. People who with very, very limited resources but big dreams are making India proud. That is our series, Proud to be Indian, that you will be witnessing here for the next few hours as we unfold a lot of these important stories, Abhishek. And you've been speaking up to the blind cricket team, and I was just listening into them. This is so inspirational in spite of absolutely zero publicity, I think, because we all talk about everything else but the blind cricket team and a lot of other limited resources at their hands. But look at the kind of feat that they've brought for the country, the laurels that they've won, and this is the reason why we are also proud to be interviewing and speaking to them, Abhishek. Oh, absolutely. Deepti, since you mentioned it's a ritual with us, it's a ritual we love. It gives us goosebumps. A fantastic idea. Began with our editor-in-chief, Arnab Goswami, starting it when we launched Republic, in fact, from the first year itself. Yes. And since then, every year on 26th Jan and 15th of August, we do this. Small stories that make India proud, that give us, that inspire us as citizens of this country to be doing whatever we can from wherever we are, irrespective of the resources. And that's essentially the whole idea. To bring these unsung heroes, in many times stories which are, sort of lost in the din of the daily news cycle, and yet these are occasions when you are reflecting on what it means to be the citizen of the country, to be bringing those stories under the spotlight. So
Are we moving to the next? Or Major, your thoughts on this proud to be Indian series? No, absolutely, Abhishek. I remember we used to fly down to Mumbai and do it when Arnav was doing it, and now we do it at a much larger level. And I think the takeaway for me is the same as yours, but I'll add on a few lines. You see, this series that we do, and we do it every 26th of January, makes me realize that there are heroes all around us. It's just that many of us don't know. Absolutely. And there are superheroes around us, and I've met so many people, and I feel privileged to meet these people every time 26th January comes along. And like, for example, I literally apologized to the blind cricket team. I didn't know that they were 3-time world champions, and I didn't know that. And there were heroes right in front of us, and it gave me goosebumps. And we have heroes lined up throughout the day for our viewers today, Abhishek. Absolutely, Major. So now you know, and in that series, the next story we are bringing to you is that of a gritty woman who has brought around youngsters, particularly girl children, women child, and got them into space research, got them curious about space activities. ISRO would be launching a Space Kids India satellite made by 750 school children later this month. Meet the founder of Space Kids, who's also the first Indian woman, in fact, to experience zero gravity. Srimati Kesan, Dr. Srimati Kesan. Dr. Srimati Kesan is a visionary in her own right. In 2022, she became the first Indian woman to experience zero gravity. Dr. Kesan is the founder of Space Kids India, a Chennai-based space tech startup which is slated to launch their satellite made by 750 girl students studying in government schools. Dr. Kesan is leading the initiative to encourage government school children. Dr. Srimati Kesan is the only Indian woman to be decorated with the ambassador status at the top 3 space centers of the world, NASA, ESA, and GCTC. Kesan is now working tirelessly on achieving her own goal, powering the next generation of scientific thinkers in India. Yes, so proud to be Indian. Let's welcome and say good afternoon to, the ever-smiling Dr. Srimati Kesan. She's done some fabulous work, and it's nice that that smile gets broader because we are absolutely proud to be speaking to you, ma'am, this afternoon. First up, I want to understand that, to be able to reach the position that you've reached, to be speaking about space, ISRO, satellites, wanting to get little girls all interested in this particular field, this absolutely would have not been easy. So from where did this start? When was that eureka moment of yours when you realized this is what you want to do? Deepti, thank you so much for having me in this show. Absolutely proud to be there on the Republic Day. Pleasure, ma'am. Just before I speak about space, I have to say I've been an ex-NCC cadet marching there on the 26th January at Delhi Republic Day. So, every 26th January is a proud moment. And I was to get into the armed forces and serve the army. But I think that was a change in destiny where I got married, and after a sabbatical of 16 years, there was a eureka moment when a friend of mine put me into a conference at Miami, a absolute homemaker getting into NASA and giving presentations and everything, and they getting so excited, and they said, why don't you bring your children here, the Indian children? And that was the moment when the destiny changed in 2009, the month of May, ever etched in my heart. And the first trip was 2010 on 27th April when I had taken about 108 children from India to NASA for the space camps. So that was the first time I should say that, something within me, the fire, I should say, which was
always burning within me to do something for the country, came back again. Though it was not in the armed forces, now I'm working with the future generation. So this gives me even more pride that I am there with the future generation. All right, this is Abhishek, Dr. Kesan. How did you zero down on this idea that in the 75th year of independence there should be a satellite, and you would be involving 750 girls from across the country and get them going? And if any challenges you faced, tell us the story of the Azadi set and how you went about it with that focus on getting women, these little girls, involved. We speak, Abhishek, thank you for the question. We always speak about, women in STEM. And what is happening is young children are getting into STEM only until their post-graduation. And, it keeps depleting. The percentile keeps depleting as and when the age factor grows, due to various reasons. I thought it was only in India that, marriage, children and all these change the facade of a woman's life. But interacting with international women, I get to understand that every woman has got so many challenges in, bringing up a family and working in STEM. Because STEM is one particular thing that you have to be there in the labs, say 24/7, because when we work with satellites, you don't know the timing, when we started working with Azadi Sat, 33 days we have not slept. We were completely into the lab because these are young children. And, to begin with, I gave the proposal to ISRO when I was in the ICCU, at Apollo. And, I was actually affected by COVID. And on the ventilator, people thought I was really going to kick the bucket. But I think I told myself that I want to work on Azadi Sat. This is a great, passionate one. Even though I've worked on different satellites, this is the most passionate one. And I wouldn't want to kick the bucket before completing this satellite. That was the passion. And thanks to, the scientists at ISRO who approved, the chairman who approved that this concept was very, very good, working with 750 girl children, bringing them all together, and especially the government school children from Jammu Kashmir to Kanyakumari. Abhishek, you must see when, I brought all these girls together on a single platform while interacting with them and, teaching them the nuances of satellite making. There were tears rolling in these children's eyes. And, my team, Space Kids team, all young adults, I should say, they were like, they're all boys, and they were like, why only girl children? You are being biased. This is what, they started. But then the first time when they met 750 children live, oh my God, everybody calling them Bhaiya, Anna, they all went, they had goosebumps. They said, oh my God, ma'am, I think we took the right decision of, having 750 girls to build this satellite. See, in our country, we give more importance to engineering and medicine. But with regards to these government school girls, I interacted almost with 350 schools, and then I got to 75 schools. It was very difficult convincing the schools to first understand what is a satellite and that, we are doing this for the country, and these children are going to really have a career awareness into space. But many schools refused, and many schools did not understand the concept. And some schools blatantly said, हमारे लड़कियां ये पूरा नहीं करेगी, उनको नहीं आता है, ये आप time waste कर रहे हो. I mean, it was sad. I'm not being negative, but it was sad for me that, we still feel women are not there, Women can only do designing, food, take care of home. That is a pain factor for me. And that is the reason I said somehow I need to bring these children to the forefront, give them this awareness of this niche industry called space, and give them a career. You wouldn't believe, Abhishek, now after working with this satellite,
these 750 girls march with their head high. And you know, they talk such language about science. Oh my God, it's mind-blowing. They had an experience to interact with the chairman ISRO and, you know, scientists at ISRO. And they were like, you know, this is a different world altogether. And children who were like, you know, too naive now have become very bold. So Azadi Sat is not only building a satellite, but it is building their character, building an attitude for the girls in our country. True. Oh, absolutely. Absolutely. Ma'am, my name is Major Gauravaria, ma'am, and I don't have a question for you, but I just want to say something. You said that you wanted to join the army and you could not because of certain compulsions. Ma'am, you don't have to wear a uniform to be a soldier, and I think you have already served. You have served your country very well, ma'am. You are a soldier, and I'd like to thank you for your service. And I see there is a Bollywood movie script right there, you know, collecting all these kids and saying, okay, let's send a satellite to space, bada maza aayega. This is the stuff of dreams. And this is what soldiers do. You know, we have a saying in the army, ma'am, that the difficult we will do and the impossible will take a little longer. And that's what you did. The impossible took a little longer, but you did it. Thank you for your service, ma'am. Thank you very much. But I have to ask a question. I also have a question now for Dr. Kesan. You know, you just spoke about... Thank you, ma'am. Yes. Ma'am, it's a salute for you also. Like I said, you know, the very fact today that you're sitting there, you've got these 750 girls who possibly today, you know, are different individuals. You've turned them into different individuals. And for long in this country, you're being told that, okay, because you're a girl, you know, you'll get into home sciences, you know, study, become a professor, do anything else. But space, like who does space? I mean, that's not for you. So what is the message today that you would want to give out to millions of these girls with dreams in their heart, you know, in their eyes, when they, I think, when you're also talking about these girls, I mean, I saw how proud you actually became, you know, I see that in your body language. That's the entire pride that we want to instill in our little girls. So what's your message this afternoon to all of them? Well, I would always tell this, Dipti, that, you know, people will say you cannot, you will not, and only then you can. So when there is a cannot, you know, remove that, erase that not. It is always the can, you know. We are wired like that. Women are wired like that. When people push us hard, we come out, you know, bright, super successful and strong. So as much as they push you, you have to come out. And India needs young women like you in all the fields. And it's not only the STEM, but you know, other forte also. So I'm really looking at young girls. I'm really looking at young girls to flourish in all the fields, succeed in all the fields, and march forward. There is so many challenges. It's like, you know, no pain, no gain. So accept the pain and march with pride. I think those are beautiful, inspirational words, and we not just say we are proud to have you on the show. I think we're really proud that you're building up these girls, their futures, making them live the dream. I think they all would be really, really proud about. Dr. Srimati Kesan, it's a pleasure, ma'am, and an honor again that you've joined us this afternoon. And more power to you, like they say. You know, the next time Abhishek and Major Gauravaria, we'll be talking to her, you know, who knows, you know, she'll have more girls. And, you know, like you said, please keep the boys out of it right now. Let the girls go there, let the girls sail high, and let them, you know, live their dreams. So thank you so much, ma'am, for speaking to us this afternoon. An absolute slice of Nari Shakti there. Thank you so much. And in fact, from Kashmir to Kochi, the Tiranga flies high today. Let's take a look at this quick report filed by Gursimran Singh from the Suchetkar border, and then come back.
गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो चुकी है और अब बारी है जश्न की। फ्लैग होस्टिंग के बाद अब बीएसएफ के जवान जो हैं वो देशभक्ति के गानों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। जश्न उस खुशी का है जो उन्होंने इस पूरे साल में जो है हासिल की है। इस साल में किसी भी बड़े आतंकी हमले को इन लोगों की तरफ से विफल किया गया और यही कारण है कि अब लोग ये खुशी में जो है वो झूम रहे हैं, हाथ पांव थिरक रहे हैं। देशभक्ति के गानों में थिरकते बीएसएफ के जवान इस बात को भी साबित करते हैं कि ये लोग देश के लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर कर सकते हैं और जब मौका मिलेगा तो ये जो है देश के लिए नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। All right, those were celebrating soldiers there at the border with Gursimran, Deepthi and Major. In fact, let's move on to our next guest, Sharad Vivek Sagar. He rose from a small town in Bihar to now becoming the first Indian Student Union President at the Harvard. Here is his inspiring story and how he is paving the path for others. Let's look at it, and then of course he joins us live. Impossible is nothing for Sharad Sagar. In 2022, Sagar became the first Indian to be elected president of the student government at Harvard. At the age of 16, Sagar founded the national organization Dexterity Global. Because we cannot continue to parachute solutions. And for that reason, I founded Dexterity. That is the work we've been doing for the last 12 years. Instead of calling ourselves an educational organization that also looks at leadership, right from 2008, we've been talking about one simple thing. Our mission statement says, we are on a mission to power the next generation of leaders through educational opportunities. Today, leaders trained in the Dexterity system have received over 114 crore rupees in scholarships from top universities across the world. That is not all. Former US President Barack Obama invited Sagar to the White House in 2016. He was also one of the invitees at the Nobel Peace Prize ceremony the same year. When Sagar was just 24, he was part of the prestigious global Forbes 30 under 30 list. While miles to go, Sharad now aims to power the next generation of leaders. All right. So we have Sharad Vivek Sagar, who's the first Indian to be elected president at the Harvard Graduate School. Now, Vivek Sagar, a very warm welcome. And my first question to you is, how is getting elected there different from getting elected here? I mean, any difference in the politics, student politics? I'm sure there is, but we'd like to hear from you. Thank you very much for having me. My namaskars and happy Republic Day to everybody watching, all of our Indian citizens all across. Happy Republic Day and a blissful Saraswati Puja. Yes, the difference I think might be in, how high decibel things get. Also, I think it was around the time when COVID had just begun to subside. So, majority of the campaign was, emailing, meeting small groups, reaching out to people. But in general, student issues are student issues, and then also the ability to put forward a track record that you can get the job done. So I think I've just been fortunate. It seems, Major Gaurav, that Sharad is a man of few words. So we'll have to actually get him talking, because with the tremendous amount of feat that you've achieved, Sharad, you are a guest here on a Proud to be Indian series where we, bring together individuals with stories that completely inspire us. So, there are millions watching you this afternoon, Sharad. Why don't you tell us what took you from Bihar to the Harvard? People will say, Bihar wale kahan jayenge, kahan tak jayenge? You've reached Harvard. I mean, you've done tremendous, and I'm sure this journey, this journey hasn't been easy. So why don't you tell us what you really did, how you brought about this journey, what do you intend to do, Sharad? For sure, and I think it is an important day for me to be
on the show talking, because the place where I was born in Bihar is a place called Ziradai. The first president of India, Dr. Rajendra Prasad, and the first president of the Constituent Assembly was born in Ziradai. I was born 8 kilometers from where President Dr. Rajendra Prasad was born. And I grew up in small towns and villages of Bihar, started regular schooling only at the age of 12. And throughout this time, my parents, very concerned how they would educate us, made it mandatory for us to read newspapers every day. We grew up with the teachings of Swami Vivekananda, and textbooks and notebooks were brought home and we wowould study at home. Reading Swamiji, a lot of faith in self and a lot of, understanding of this responsibility that India's next generation really needs to ensure that India is the song that the world sings and India the story that the world tells. So there was this huge passion within that whatever we are studying, whatever we are learning, we have to put it to use, make sure that India is stronger as we grow forward. At the age of 12, I went to school, and throughout this period when I was being homeschooled, I had picked up this very simple habit. Every year in the newspaper, I would read at least about 3 kinds of students. Some kid who had just received a full scholarship to go to university, some kid who had just represented India at a global platform, and some kid who had just won an international competition. I wanted to do these things. I wanted to secure a full scholarship to study at a top university. I wanted to represent India. I wanted to win international competitions. But I could not have done any of these things because I was not enrolled in a school. So I had picked up a very simple habit as a kid. I used to write down these opportunities every time I read a news that, okay, who was the kid, in which month this competition comes, who can participate and how. So I came to Patna with my mother in the capital city of Bihar at the age of 12, got enrolled in a school and started participating in all of these competitions. And soon enough, I had, this great, I was fortunate, I was privileged. By the time I was finishing grade 12, I had represented India in over 6 different countries and won close to 200 different local, national, international competitions. But that was the exact point when, I started working on Dexterity, the organization that I founded at the age of 16. Because, as a 9th, 10th grade student, I would go to Japan or South Korea, come back, and I would tell my friends in my classroom that, how the flight took off, how, the streets were wide and clean, what kind of hotels we stayed at. And many times I would also tell them the questions that were asked or the ideas that young leaders from all around the world put forward. And many times kids sitting in my classroom who came from, smaller towns and villages of Bihar, they knew an answer that everybody missed out on at a global platform. Many times they had ideas far brighter than any other idea put forward on these global platforms. And this is when, it began to occur to me that if my classmates are so hardworking, so smart, so talented, and they too have big dreams, why are they not present at all these national global platforms? And at these global platforms, they used to fill us with a lot of pride that you are the ones who are going to lead the world tomorrow. And many times I felt the young people who are representing India came from, 2-3 major towns like metropolitans of our country and 2-3 major schools. So if we were talking about access to clean drinking water at a United Nations platform, the girl representing India there wasn't a kid, from a small village of Rajasthan who had seen her mother go 1.5 kilometers to, fetch a bucket of water. So that is when at the age of 16 I founded Dexterity with 2 simple goals. First, if there's an opportunity designed especially for our kids, they should be the first ones to know about it and they should have preparation platform. Second, identify local role models from different parts of the country and help them grow as next generation leaders. So we work on their career development and leadership development. That's what we are doing. Yeah. All right. Okay, I think Sharad, you've explained and put that out very well. And just one quote before I thank you. He said, if India has to grow, a generation of young Indians, Sharad said, will have to bridge the gap between classroom education and global leadership. Extremely important words in today's day and time. And Sharad, you're a hero in your own stride. More power to you. May you continue to do the good work. And, like we say at Republic, please keep getting these people together and create, help them build their new dreams. I thank you only for one of time, Sharad. It's been a pleasure and an honor speaking to you. Sharad Vivek Sagar, they're, underscoring what he's done, Major Gauravaria and Abhishek. As we quickly move ahead, there are a lot more proud to be Indians. A lot of newsmakers, a lot of our viewers are asking Abhishek, who else is going to be coming up next? And I think you have more insight into that. Yes, in fact, what we'll do is we'll keep dipping into our reporters who are spread across the country and getting us pictures from among the soldiers
at the border. In this case, I believe we are told it's in Kashmir. Yes. So let's move to Vaibhav. He's in Punch, in fact, not Kashmir, but in Jammu. Jammu division. He's in Punch district along the line of control, I believe. Vaibhav, over to you. Please tell us from where you are reporting. If you can get us a flavor of the Republic Day festivities there, Vaibhav. बिल्कुल, हम इस वक्त पुंछ में मौजूद हैं और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस पहाड़ी के ठीक पीछे पाकिस्तान और इस पार जहां पर हम खड़े हैं, यह हमारा देश भारत जो आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ की तस्वीरें सबने देखी, पूरे देश ने देखी, कैसे आज महिलाओं ने उन तमाम टुकड़ियों का नेतृत्व किया और सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई। पुंछ में भी आज यहाँ पर मार्च पोस्ट जो है वो की गई, यहाँ पर स्पोर्ट कॉलेज के अंदर, और इस मार्च पोस्ट में भी महिलाओं ने बढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, महिला सशक्तिकरण को लेकर अब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, मेरा नाम महिमा मैनी है और मैं यहाँ पे एसकेसी जीडीसी पुंछ की स्टूडेंट हूँ और एक एनसीसी कैडेट हूँ। और आज तो हमने यहाँ पे पहले 26 जनवरी का जो भी सेलिब्रेशन होता है रिपब्लिक डे का, हमने वो किया सेलिब्रेट। पहले हमने जाके यहाँ अपने कॉलेज में फ्लैग होस्टिंग की, फिर उसके बाद जाके हमने जो ऑल ओवर पुंछ में हम सेलिब्रेट करते हैं हमेशा डीसी सर के साथ, बाकी भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ हम करते हैं सेलिब्रेट। तो हमने सबके साथ वहाँ पे सेलिब्रेट किया और यहाँ पे हमने परेड की। और बहुत सारी लड़कियाँ हैं भी जो आगे जाना चाहती है बट उनको जाने नहीं देते, बट हम उसी चीज़ के लिए यहाँ पे आगे आते हैं। हमारी फैमिलीज़ में से भी कभी कभी इश्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ हमें हो जाता है कि नहीं जाना, रोज़ रोज़ क्यों बुला लेते हैं या ऐसा कुछ, कभी कभी हो जाता है, इश्यूज़ हो जाते हैं। बट हम यहाँ पे खुद आते हैं, वॉलंटरली खुद आते हैं, ताकि मतलब बाकी जो हमारे साथ की जो भी लेडीज़ हैं, जो भी गर्ल्स हैं, हम उनको मोटिवेट कर पाए कि आप भी आओ, आप भी अच्छे से पार्टिसिपेट करो, अच्छे से आप भी अपने पुंछ का, अपने जेएंडके का, अपने इंडिया का नाम रोशन करो। इसलिए आपसे मैं बात करना चाहूंगा, 74वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है, क्या मैसेज आज आप यहाँ से देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और क्या सीखा आज आपने? जय हिंद, हम नाज़रीन उर्दू हैं। आज हमने जो पुंछ सेलिब्रेशन जो हुआ, जितनी भी गर्ल्स आई उन्होंने देखा कि यहाँ पे कितनी गर्ल्स आगे बढ़ चढ़ रही हैं। हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम जाएं आगे, हम देखें खुद को कि हम क्या कर सकते हैं। लड़कियाँ लड़कों में कोई फर्क नहीं है, लड़की और लड़की में जो लड़की है वो लड़कों से आगे जा सकती है। इसलिए हम चाहते हैं जितनी भी लड़कियाँ हैं जो घर में जो काम कर रही हैं, जिनको स्टडी में इंटरेस्ट है पा रही हैं, आजकल तो स्टडी के लिए बहुत स्कॉलरशिप स्कीम निकाली गई है गवर्नमेंट ने कि स्टडी करें, जो पोर बिलोंग करती हैं, बट वो चाहती हैं कि हम स्टडी करें। बट कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि वो चाहते हैं कि खाने में बिजी रहें या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाए तो वो आगे बढ़े, हमारे इंडिया का नाम रोशन करें, स्पेशली हमारे जेएंडके का नाम रोशन करें, कि वो बताएं कि हम कुछ बन सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। फाइनली हम इंडियन आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। Alright, Vaibhav there is getting us that coverage from the Poonch sector in Jammu and Kashmir. Vaibhav, I want to thank him and all those guests joining us. So we are running short of time. A lot of Indians that have, are wanting to speak. Vaibhav, we'll come back to you later. Abhi ke liye बहुत shukriya. Abhishek and Major Gaurav Arya. Next guest is very, very special. In fact, all the guests are very special, but this is a personal favorite. So I'll say that out, This is Anand Kumar. Abhishek, you want to speak more about him, and then I will take the first question. No, you take the question. You begin with the question. I think we are told he's connected live. Go ahead. Okay. So he actually needs no introduction. Anand Kumar is joining us. Anand, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस समय हैं. If I could just congratulate him for the Padma Shri. बिल्कुल. और अभिषेक ये मैं पहला सवाल पूछूंगी तो आप इसको प्लीज हाईजैक मत करिएगा. He is getting a Padma Shri. He's done tremendous work. आनंद, आपने जो किया है और जिस तरह आपके ऊपर जो पूरी मूवी बनी है, I will say it's an understatement. I think आपने खुद जितना काम किया, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा. आनंद, hats off to you. We are superly proud of you and many congratulations from the entire team here at Republic. You're getting the Padma Shri. Anand, cliche question है लेकिन पूछना पड़ेगा, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आप लोगों का, तमाम लोगों का मैं
धन्यवाद देना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी आपने साथ दिया और आज से 20-25 साल पहले से ही सुपर 30 चल रहा था, तो आप लोग जैसे लोगों का साथ मिला। देशवासी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। घर में खुशी का माहौल है, स्टूडेंट्स मिलने आ रहे हैं, स्टूडेंट देश विदेश से फ़ोन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको, भारत सरकार को, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। Should I go ahead? Yes, please. आनंद कुमार जी, एक तो थोड़ा और लाइटर नोट में पूछ रहा था कि बिहार से तो ऑलरेडी इतने सब आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआईटी में जाते हैं, तो आपने और थोड़ा कर दिया तो और ज्यादा हो गए। बट स्टिल, यू नो, ऑन अ सीरियस नोट, given the story of Bihar we know over the last 3 decades, you know, what were your challenges? I mean, you know, it has been well chronicled story, but for the benefit of viewers of Republic, what have been your challenges in the early days? Now, of course, you are a celebrity, you have the Padma now, and there is a movie on your life story. But then, what were your challenges when you began? And that, in fact, gives us a glimpse into the story of Bihar as well, perhaps. बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज से 3 दशक से बात की जाए तो चैलेंजेज पहले दौर में बहुत था, और कोई काम आप लोग शुरू करिएगा तो आपको चैलेंजेज फेस करना पड़ेगा। तो गरीबी का चैलेंज था, बच्चों को खिलाने का, रखने का, और साथ साथ जो यहाँ माफिया अटैक करते थे, लोग बदनाम करते थे, ये सब तरह की चैलेंजेज थी। लेकिन हम इस पूरे घटना से, अपने 20 साल के अनुभव से बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जीवन में चैलेंजेज आते हैं, संघर्ष आते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिल से काम करते रहिएगा, ईमानदारी से काम करते रहिएगा, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती ही है। जी आनंद जी, मेरा नाम मेजर गौरव आर्या है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहले तो पद्मा अवार्ड के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिमाग में आपके ख्याल कैसे आया कि ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाऊं जो शायद पूरी फीस न दे पाए, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊं जिनको मौका ना मिला। ये दिल में बात कहां से आई आपके? दरअसल में 1994 में मेरा एडमिशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए हुआ था, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पिताजी लो पेड एम्प्लॉय थे पोस्टल डिपार्टमेंट पे, और हमारे पास हवाई जहाज़ के किराए का भी खर्चा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमारे पिताजी का सडन हार्ट अटैक हो गया। वो बहुत टेंशन में रहते थे, और उनके जगह पर सरकारी नौकरी मिल रही थी मुझे। लेकिन फिर लगा कि हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जिनमें हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, जिनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, बट रिसोर्सेज नहीं, ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहिए। तो हम पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी ना करके पिताजी के जगह पर ये काम की शुरुआत की, और आज आप लोग के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह का एक अच्छा सवाल पूछा। और आनंद, मतलब ये हमने नोटिस किया मेजर गौरव आर्या कि सुबह से जो इतने मतलब बढ़िया गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने इतना काम किया, ये बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो कम बोलता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आनंद, लेकिन आपको इस समय मिलियंस ऑफ व्यूअर्स रिपब्लिक पे देख रहे हैं, और उनमें से कुछ बच्चे हैं जो व्यूअर्स है वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ सुपर 30 रहेगा? 30, 300 कब बनेगा? 3000 कब बनेगा? इसका साइज कब बड़ा होगा? इसी साल से होने जा रहा है। हम लोग देश के तमाम बच्चों के लिए इसको ओपन करने जा रहे हैं, बड़ा करने जा रहे हैं, और साथ साथ ऑनलाइन के भी जरिए बच्चों के पास पहुंच पाए। इस साल के आखिरी तक हम लोग ये दोनों मकसद में कामयाब रहे, इसके लिए आप लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद की जरूरत है। फैंटास्टिक। एंड आई नो वी नीड टू रैप, बट मुझे एक छोटा सवाल आपसे एक और पूछना है। मुझे बताइए कि हर टीचर का ना एक फेवरेट स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट्स मतलब अपने प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो आज आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है, कुछ ऐसा एनेक्डोट आनंद, इससे पहले हम आपको थैंक यू बोले? बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट हैं। आज अभी हमारे पास एक स्टूडेंट आया, धनंजय, जो हमसे पढ़ के इंजीनियरिंग किया, उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालिफाई किया, फिर लंदन जाके पढ़ाई की, लेकिन सब चीज़ छोड़ के उसने फिर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और आज अपने टीम के साथ आया, अपने स्टूडेंट के साथ मिलने आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया। यस अभिषेक। आनंद कुमार जी, धन्यवाद। हमें बताया जा रहा है कि आपको जाना है कहीं, आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं पद्मा की, और आपने जो पिछले 3 दशक से ज़्यादा में 3 दशक में किया है वो अपने आप में एक यात्रा है।
जो इंस्पायर करती है और प्रेरणा देती है बहुत लोगों को कि वो त्याग की भावना से देश सेवा करें। और मैं समझता हूँ आज का दिन है उन सारे लम्हों को याद करने का जो आपने मुश्किल में गुजारे, ये सोच के कि आपके हर कदम से देश का फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी, मेजर। ऑफ कोर्स नाउ ऑफ कोर्स इट्स बीन वेल chronicled in the movie, as you were rightly mentioned. Your thoughts on your takeaway from what Anand Kumar really has achieved and coming as he does from Bihar? My thoughts are simple, that if a man wants to do it or if a woman wants to do it, there is no stopping that person. He made up his mind, he gave up the idea, he had a government job on a platter, which in Bihar and in UP and other states is a very, very big deal. So this is clearly, this person is doing something that he really, really believes in. Absolutely. He's on mission mode, and I think that is my biggest takeaway, Abhishek. Absolutely. All right, I'm told we have a new guest. Deepthi? Yes, we will now introduce our next guest. And again, a quick reminder to all our viewers, you're watching a Proud to be Indian series. A lot of our viewers, in fact, Major Gaurav Arya and Abhishek, have been asking that, why don't we cover these stories every day? And I think that's a good point, because the moment you start talking about these people, you get these heroes together, you realize that there is just no dearth of such heroes. Absolutely. So everyone in their own right is a hero, is a superhero. So let's, now welcome and say good afternoon to Dr. Kriti Bharti, who's joining us. But before we have her on the screens, a little bit about her. Now, why is today she a superhero? Because in a state like Rajasthan, where you have the issue of child marriages, you also have a lot of issue when it comes to dowry-related problems, she is a warrior. Because she has ensured that little girls do not get trapped in this vice. Instead, she's prevented a lot of these child marriages. She has been honored by the United Nations nonetheless. And now she has big dreams, big plans. Before we get set in this conversation with her, this is just a quick snippet of her journey so far. Meet Dr. Kriti Bharti, who is working against child marriage in Jodhpur. Kriti Bharti founded Sarthi Trust in 2011 to stop child marriages. Since the conception of her NGO, approximately 47 child marriages were terminated and 1,600 child marriages were cancelled on spot. Kriti Bharti was conferred upon with the Global Youth Human Rights Champion in 2022. Year after year, Dr. Kriti Bharti has been making a call for concerted global efforts to end the deplorable practice of child marriage. She hopes that one day child marriage would only be documented in books. India is proud of Dr. Bharti. So Dr. Kriti Bharti, the proud hero, joining us on the broadcast. Dr. Kriti, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करें. It's an absolute pleasure and an honor, ma'am. We are all proud of you and the work that you've done. But ये कहना अंडरस्टेटमेंट होगा कि आप जहाँ तक पहुँचे हैं और आपने जितने बच्चों को और उनकी ज़िंदगी को बचाया है, उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी खुद की जर्नी भी बहुत आसान नहीं हुई है. You've had a traumatic, a disturbed childhood. और वहाँ से निकलकर ना ही आपने अपने आप को संभाला, लेकिन आपने ये कोशिश की है कि आपने बहुत सारी और बच्चियों की ज़िंदगी बचाई है. सबसे पहले खम्मा घनीसा राजस्थान से और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल. जैसा कि आपने बताया, जैसा भी आप शेयर भी कर चुके हैं, मेरा चाइल्डहुड थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा है और उस स्ट्रगल की वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन इन बच्चों को बचाने के लिए मैं हूँ. मैं उनकी कृति दीदी हमेशा उनको बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद रही हूँ. मेरा बचपन थोड़ा संघर्ष से गुजरा है. मेरे फादर ने मुझे जन्मने से पहले ही अबैंडन कर दिया था. उसके बाद बहुत मुश्किलों से मेरा जन्म हुआ. मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरी बेटी आए. कोई नहीं चाहता के अलावा कि मैं इस दुनिया में जन्म लूं. जाको राखे साइया मार सके ना कोई वाली जो पंक्ति है, शायद वो मेरे ऊपर बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है. एक सतमासी बच्चे के रूप में मैंने बहुत मुश्किलों से इस दुनिया में जन्म लिया. उसके बाद
आज जहां मुझे हर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर अवार्ड्स ऑनर्स मिले हैं, लेकिन एक ऐसा समय था कि मुझे लव केयर अफेक्शन प्रोटेक्शन इन सब चीजों से मैं डिप्राइव्ड रही हूँ। एक ऐसा समय भी था कि कोई मेरी शक्ल नहीं देखता था। देयर वाज अ फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, मेनी थिंग्स आई हैव सीन। उसके बाद 10 साल की उम्र में मुझे जहर दे दिया गया। उस जहर का असर ये हुआ कि मैं बेड रिडन हो गई। मैं न चल सकती थी, न मैं बैठ सकती थी। मैं अपनी हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो गई थी। मेरी मदर ने इंडिया में जितने अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सब ट्राई किया, बट नथिंग वर्कड। उसके बाद अगर आपने रेकी थेरेपी का नाम सुना हो, तो मेरे गुरुदेव हैं भीलवाड़ा में, श्री ब्रह्मानंद परमहंस। उन्होंने मुझे 9 महीने लगातार रेकी थेरेपी दी और मैं उससे ठीक हुई। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को याद होगा कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे पहला कदम कैसे रखा, बट मुझे याद है। मैंने 12 साल की उम्र में फिर से चलना सीखा है, फिर से बैठना सीखा है और एक तरह से अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत की। और उसके बाद 12 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। वो था अपना सरनेम चेंज करना। मैं अब हर चीज से ऊपर उठ जाना चाहती थी, हर जाति, हर धर्म, हर एक तरह से मैं भारत की बेटी बन जाना चाहती थी। और 12 साल की उम्र में मैंने अपना लीगली सरनेम चेंज किया और मैं कृति भारती, भारत की बेटी बन गई। उसके बाद क्योंकि मैं बेड रिडन होने के कारण मेरी स्कूल ड्रॉप हो गया था, एजुकेशन ड्रॉप हो गया था, तो मेरी मदर ने मुझे वापस एजुकेशन से जोड़ा। मैंने वापस एजुकेशन 4th स्टैंडर्ड से सीधा 10th स्टैंडर्ड जंप किया। एक अलग ही दुनिया थी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सब चीजों की, बट 16 से 18 घंटे मैंने पढ़ाई की है। और उसके बाद मैंने बहुत मुश्किलों से 10th का एग्जाम क्लियर किया। आज पीएचडी की डिग्री है, पोस्ट डॉक्टरल है, 7 डिग्रियां हैं मेरे पास। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मार्कशीट 10th की मार्कशीट रही। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैं कुछ एनजीओ के साथ जुड़ी और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि यस, मेरा जन्म बदलाव के लिए हुआ है। जैसा मैंने कहा, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन इन बच्चों को बचाने के लिए मैं हूँ। और एनजीओ के साथ काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे रूट लेवल पे काम करना है। मैं बहुत छोटी एज में इस फील्ड में आ गई थी, तो मुझे बदलाव करना था और इस हद तक बदलाव करना था कि मुझे अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं थी। तो 2012 में मैंने सारथी ट्रस्ट की स्थापना की और स्थापना के जस्ट बाद मैंने देश का पहला चाइल्ड मैरिज एनलमेंट, जिसको कैंसिलेशन कह सकते हैं आप सरल भाषा में, वो करवाया। इससे पहले अभी तक ये बात होती थी कि अगर चाइल्ड मैरिज होने वाली है तो जाइए रुकवा दीजिए। लेकिन उन बच्चों का क्या जो चाइल्ड मैरिज जिनकी हो चुकी है, जो उस चाइल्ड मैरिज में शोषित हो रहे हैं। इस सोच के तहत देश का पहला चाइल्ड मैरिज कैंसिलेशन हुआ, क्योंकि ये पहली बार था कि भारत में चाइल्ड मैरिज कैंसिल हुआ, तो उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने करिकुलम में मेरी इस मुहिम को शामिल किया। उसके बाद लगातार मैं बाल विवाह रुकवा भी रही हूँ और कैंसिलेशन यानी अनलमेंट करवा रही हूँ। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि राजस्थान जहां बदनाम है सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होने के लिए, वहां मैंने कोशिश की है पॉजिटिव अप्रोच लाने के लिए कि यहाँ सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला चाइल्ड मैरिज कैंसिलेशन अनलमेंट राजस्थान में हुआ। और राजस्थान आज पूरे देश में सबसे अव्वल दर्जे पे है। इट्स अ लीडिंग स्टेट जहां सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज कैंसिलेशन हुए। मुझे बहुत सारे ऑनर्स मिल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, बॉलीवुड, हॉलीवुड से भी मुझे काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ये है कि मैंने 1600 बच्चों को चाइल्ड मैरिज होने से पहले उनका चाइल्ड मैरिज रुकवा दिया। 48 बच्चों का चाइल्ड मैरिज कैंसिलेशन करवा दिया। 25,000 लोगों को मैंने बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई है और 15,000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को रिहैबिलिटेट किया है। और मुझे लगता है यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। और जैसा कि आप अभी बता चुकी हैं कि मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं चाहती हूँ कि
क्योंकि अब हम 2023 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बस यही इच्छा है कि अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो, शोषण खत्म हो, जो हमारी शोषण की बेड़ियां हैं, बाल विवाह की बेड़ियां हैं, वो टूटे। और बाल विवाह पीड़ित सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे, वो है किताबों में, और हम सब मिलके कहें वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड मैरिज। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर कृति ने बहुत बढ़िया बात कही। और डॉक्टर कृति, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से हर कोई एक हीरो है। बिकॉज बहुत ये कहा जाता है मेजर गौरव आर्या कि जब आप अपना दुख देखते हैं आपको लगता है आपका अपना दुख ही बड़ा है, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ जाते हैं और जिस तरह डॉक्टर कृति ने मतलब संघर्ष किया है अपने पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बावजूद, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल डॉक्टर कृति, मोर पावर टू यू। आप ऐसे ही लड़ते रहिए और हम चाहेंगे कि दोबारा हम आपसे ज़रूर कभी बात करें। आपको भी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमसे बात की, समय निकाला, थैंक यू सो मच। सो दिस is a proud to be Indian series, Abhishek Major Gaurav Arya, a series that again and again makes you realize that, there are heroes, there are warriors in every nook and cranny, Abhishek, of the country. It's just about noticing them and acknowledging them, Abhishek. Oh, absolutely. And in fact, we are having our correspondents on the ground live from Kashmir to Kochi and from Kutch to Kohima. We will take a short break and then we come back. I believe we go to Wagah and then, of course, Kashmir, where Shawan Sen is reporting from Gandarbal, I believe. But short break. Amity faculty have filed over 1,700 patents. Yet another reason why Amity has been conferred with the National Intellectual Property Award by Government of India for being the top Indian academic institution for patents and commercialization. Roundup of how the country is celebrating Republic Day today. As Bihar gears up for the Republic Day, Bihar's Vidhan Sabha in Patna was illuminated with tricolor lights last night. Vidhan Sabha and other government buildings in Jaipur were also illuminated with tricolor lights ahead of Republic Day. In Lucknow, the Vidhan Sabha, Lok Bhavan and Charbagh railway station were illuminated with tricolor light ahead of Republic Day celebrations. Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus and Mantralaya in Mumbai were also lit up with tricolored light ahead of Republic Day. Even suburban near C-Link and Collector Office were illuminated last night. Kolkata geared up for the 74th Republic Day celebrations as Raj Bhavan was illuminated with tricolor light. National capital geared up for Republic Day celebrations as the Qutub Minar and Supreme Court and other buildings were seen illuminated with tricolor. A band show meanwhile was organized ahead of Republic Day as Rajasthan city was seen illuminated with lights. A mesmerizing dance performance on the national song was seen at the Delhi airport, setting the mood to celebrate the joy of being a republic. Top headlines at 6:30. The nation marks 74th Republic Day. President Murmu to hoist national flag at 7:30 a.m. Countdown to Republic Day parade. Over 65,000 people to witness Grand Parade at Kartavya Path. Nation salutes its heroes on 74th Republic Day. Standby for Republic special broadcast at 12 p.m. Largest crew of reporters on ground for the largest coverage on the 74th Republic Day. "106 Padma Awards announced, 6 Padma Vibhushan, 9 Padma Bhushan and 91 Padma Shri Awards. Big move by the United States, announces to provide 41 Abrams tanks to Ukraine.
All right, welcome back, friends, and we continue our rolling coverage of Republic Day, proud to be Indian segment, of course. Let's go straight live to Shawan Sen. He's joining us from Gandarbal in Kashmir, I'm told, and he's with 11 Battalion and 181 Battalion, I believe, in Budgam. He's going to be there, but as of now, Shawan, I believe you're joining us from Gandarbal. Please tell us. I was also told that there is snow happening there, and you have only a short time to give us live. Please tell us about the festive mood among the soldiers in the valley. Well, in fact, happy Republic Day to all our viewers who are tuning in right now. Through the day, we're going to come to you from a special broadcast all the way from 181 Battalion. This is known as the Charari Sharif, or rather popularly known as the Radar Station Battalion. Over the next few hours, ladies and gentlemen, we'll take you through this battalion to give you a sense of how our frontline Jawans who've been here ensuring that the counter operations in Kashmir are successful. What does it really take for them? All of this is going to be packed for you. We're going to take you through all of this, and through the journey, I'm also going to be joined by Assistant Commandant Manish. He's going to take us through, while in the next few hours, we're going to take you through multiple operations in terms of what's going to happen, in terms of how do our Jawans really train. And this particular battalion where we are broadcasting live for is also known as Radar Station, because back in 1984, when the former Prime Minister Indira Gandhi spoke to Rakesh Sharma, it was from this very place. In a short while, we will be going to that. But let's first begin in to take you through what they call as the Quarter Guard. 181 Battalion's Quarter Guard. Manish, Assistant Commandant Manish, will also join us right now. Manish, if you can just tell us in terms of the Quarter Guard, which is going to happen right now. Let's just move in. I'll ask Rawatji to just move ahead as the ceremony is going to begin, and Assistant Commandant Manish is going to tell us why exactly a Quarter Guard is so very important for any battalion, and what does it really mean, Assistant Commandant Manish, as you were saying, that for the morale of the Jawans. And we'll just turn over and show the visuals also while you can explain it to us. What does it really mean? Quarter Guard basically is a matter of pride for any unit. In our forces, by seeing the Quarter Guard, you can have a look what kind of standard the battalion is having. And during any regimental function or when any senior dignitary visit to your battalion, this is the place where guard take place. Okay. As you can see, our guards presently ceremonial dress. During today's morning function also, during Republic Day, ceremonial guard, a flag hosting was taken at the same place that we are watching right now. Right now we will be giving just a glimpse how guard gives their stakes and how Commandant Sir takes the salute. So in a short while from now, ladies and gentlemen, the commandant of this battalion, Commandant Om Hari, is going to be there for the ceremonial function, which is just about to begin. I'll ask Rawatji to step aside so that the function can begin, and we'll also once again bring in Manish to try and understand, because this happens only on occasions, to understand how does it work. This happens during any regimental function. For example, during 26th Republic Day, Independence Day, Battalion Raising Day, a ceremonial guard do take place. This is just a glimpse for you what happened early in the morning. Commandant. This is called General Salute. That is how it is done now. So that's the first guard of ceremony. We'll also try and get a quick word from Commandant Om Hari also is going to join us. Sir, thank you very much for joining us. This undoubtedly is a special occasion, and through Republic TV, if you would also like to send across a message to our viewers. It's a Republic Day, and where we remember the sacrifices that are essentially made by the Jawans. We are right in the middle of a place which is the hotbed of militancy, the hotbed of terrorism. But things have changed. We'll talk about that in a short while from now. Let's take a walk also while we move towards the radar station, while we have a quick chat with you.
significance of this particular battalion. Why is it so very important in terms of the counter-terror ops that are being carried out, and where this is exactly located? I want our audiences to understand, what does it really take? Actually, अगर हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ के डिप्लॉयमेंट की, तो आज की तारीख में पूरी कश्मीर वैली के अंदर सीआरपीएफ एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है मिलिटेंसी को कब करने के लिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट बडगांव में पड़ता है, जो रडार स्टेशन अभी आप ये देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बडगांव के अंदर है। तो सीआरपीएफ की ये हमारी अकेली बटालियन है, 181 बटालियन सीआरपीएफ, जो डिस्ट्रिक्ट बडगांव के अंदर प्लेस है। और डिस्ट्रिक्ट बडगांव बेसिकली इतना क्रूशियल डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड मिलिटेंसी की बात करें, 7 जिलों से इसका 7 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ये लगा हुआ इसका बाउंड्री है, इस डिस्ट्रिक्ट बडगांव की। तो और साथ ही साथ पुलवामा अगर देखें तो पुलवामा से लगा हुआ पाकिस्तान है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये काफी सेंसिटिव है, बिकॉज यहाँ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह भी काफी रहते हैं। तो उस हिसाब से हमारे जो चैलेंजेस हैं उनको कम करने के लिए 181 बटालियन का जो चैलेंज है बहुत ज्यादा है। आने वाले कुछ घंटों में हम अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि आपके यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस एंड you've seen a lot and things have changed over the years and post 370 also. We'll come to that a little later, but now this is very important, the place that we are going to enter. This is, your battalion is known as the radar station, and in fact perhaps Rawatji can also show these lines, what really happened back then. One of the most proudest moment of our country when the former Prime Minister Indira Gandhi spoke to Rakesh Sharma. In fact, that is also, I'm told, that the receiving stations are preserved. Tell us a little bit about the significance, the how it has been preserved over the years. Okay, ये अप्रैल 2 अप्रैल 1984 में ये तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहाँ पे आई थी, और उस समय राकेश शर्मा एक रशियन एक उसके साथ में उन्होंने स्पेस में उन्होंने गए, पहली बार गए थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। तो उन्होंने यहीं से बात की थी इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा के साथ में स्पेस में। तो उन्होंने लास्ट में पूछा था कि राकेश, हमारा हिंदुस्तान कैसा लग रहा है स्पेस से देखने में। तो उन्होंने कहा था, ये लाइन लिखी भी हुई है यहाँ पे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस अपने आप में इसीलिए बहुत ज़्यादा है कि पहली बार इंडियन कोई स्पेस में गया और उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और उसने इतना खूबसूरत बयां किया हिंदुस्तान को, और इसी के लिए जाना जाता है रडार स्टेशन के नाम से। तो पहले ये VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के पास था, फिर टाटा के पास रहा, और अभी बेसिकली ये फंक्शनल नहीं है। अभी इसको ये CRPF का हमारा एक कैंप है यहाँ पे, इससे पहले यहाँ BSF हुआ करती थी। तो अभी फिलहाल इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यहाँ पे है, और हम लोग अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, और इसके साथ हम लोग यहाँ मतलब एक हमें प्राइड फील होता है कि हम एक ऐसी जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए, let's now take a move inside right now and get a sense of what's going to happen. We'll also viewers, over the next few hours, what's lined up for you is up close. You're going to really watch how the training really takes place at a CRPF camp. Never before have our audiences been able to see the kind of demonstrations that are done and what really goes, especially in a battalion like this. It's far more challenging. While it seems quite beautiful, a location like this, but let's not forget, it's after all the challenges that makes it even more difficult for the CRPF. And unlike the army, what is very important to note here is that it is the CRPF which essentially is, I would say, the front line. They are the ones who are basically interacting with the locals directly, and that's the reason why they say that in Kashmir that was at some point in time very challenging. Things have changed, so we'll also get a sense of what has really changed, because I'll also tell you, while we were coming from the airport, how much time did it really take, and we've crossed some of the places which was always considered to be very sensitive. Let's try and walk inside and now show you that particular receiver that was used by the former Prime Minister Indira Gandhi. Let's walk in and let's try and show it to you. I think so. Wiring का शो ब्लैक कट है, चेक करो ब्लैक कट।
Okay, I think for the moment we've just lost that line with Shravan, but we'll stay live with these images. And Major Gaurav Arya, you know, as we have our team reporting from different borders, different stations today, the sentiment is very clear. It is the nation before self again and again, and everywhere that you go, Major. And you know, you've got us those wonderful reports all through. How is today a different day? What is the sentiment, you know, deep down in our forces? You see, there was this question, and this question is asked every Republic Day. Why should you have such a large military contingent marching on Republic Day? Because after all, this is about the Constitution of India, and India is a peace-loving nation. Why this over-militarization of the Republic Day parade? And this comes up every Republic Day. This debate is on social media, mainstream media. Now, what I'd like to say is that you see the gentleman here on the screen, and you see other people who are marching on Rajpath, the soldiers and all. These are the people who defend the Constitution of India, Deepthi. So these are the people who have given their life for the Constitution because they believe in this idea. It's not just a punchline for them. It's not a document that they can quote on a national television debate. Yeah. They live the Constitution of India every day, and that is why they deserve our highest respect, you know. And this is the a very limited point that I wanted to make, because you need somebody to defend the Constitution of India, and these are the defenders of the Constitution. Yeah, it's an important point you are making, Gaurav Arya. I believe Shravan, are you getting us now? Shravan, are you getting us? Right, Abhishek. I'm not very sure till where did you actually catch me, because we are right now inside the radar station of the CRPF, and there's a historical value. So what I'll try and do is, I'm not very sure, Abhishek, whether you've been able to see what was outside, and perhaps then try and walk down and show our viewers the great significance that this place has, this particular battalion of the CRPF has, and what's really written outside. And then I'll take you through that particular receiver, the receiver which is still preserved. And I'll try and show you this line, which perhaps epitomizes the feeling of every Indian. Sare jahan se acha Hindustan hamara. Now there is a significance to this once we actually walk inside, where all the assistant commandant, the commandant is here. They are waiting for us right now to actually tell our audiences why this particular place is so very important. And if you remember, with several of these space feats that have been achieved by India, we've always seen that particular clip of Rakesh Sharma. I think so, as a child also we've seen that, and we've always felt that sense of pride about our country. And what better than to actually come to that very room where former Prime Minister Indira Gandhi had come, and this is the receiver, ladies and gentlemen, which was actually used by the former Prime Minister when she connected with Wing Commander Rakesh Sharma. This was back in 1984, and if you can see, this is a glimpse of what really happened. I'll come back and I'll bring in Commandant Om Hari to just talk to us a little bit about this particular receiver, how it has been preserved. We've all seen it, sir, that one video of the former Prime Minister speaking to Rakesh Sharma just about a year back also, when we've achieved several milestones, we've always gone back to this video because this brings that pride. You are part of this battalion, you see this almost every day. Your heart must be swelling with that pride. I want you to talk to us about this particular station. When you came over, when you took over, what are the feelings that you had about, being in a battalion, which is undoubtedly very, very difficult, but at the same time has a huge historical value? नेचुरली जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये तो एक तो सीआरपीएफ का एक सदस्य होना मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है। दूसरा, ऐसी जगह पे इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम देना, ये मेरे लिए प्राइड की बात है। और फिर ऐसी जगह पे अंजाम देना जिसका आप अभी यहाँ पे वो दे रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है कि ये हमें एक बहुत बड़ा अच्छा एक मौका मिला है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रिविलेज फॉर अस कि हम इस ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट को हम प्रिजर्व कर रहे हैं। तो हमें ये एक बहुत गर्व का एहसास कराता है जब हम इसको देखते हैं ना, रिसीवर को। और इवन कोई भी आता है, कोई बाहर से कोई आते हैं, कोई टूरिस्ट आते हैं या कोई मिलने वाले लोग आते हैं या कोई ऑफिसर्स कोई आते हैं, तो सबसे पहले हम उनको ही लेके आते हैं
वो दिखाते हैं कि इसकी क्या एक ऐतिहासिक वैल्यू है इस जगह की। तो नेचुरली ये बहुत प्राइड का मौसम, मतलब हमारे लिए वो है। कमांडेंट साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अब इस वक्त जिस तरह से आप इंटरेक्शन करते हैं लोकल्स के साथ, कई स्कूल के बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनसे आप इंटरेक्शन रखते हैं, क्या कभी उनको भी ये दिखाते हैं कि आके दिखाते हैं कि ये रिसीविंग स्टेशन वही रडार स्टेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी ये पता होना चाहिए कि इसका कितना वैल्यू रह चुका है। आपकी जो इंटरेक्शंस रहते हैं लोकल्स के साथ में, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि हम लोग और अपने व्यूअर्स को भी दिखाते रहे। पूरे आपके बटालियन के बाकी और जगह की भी हम काफी चीजें प्लान्ड है, बट इसके बारे में बताइए, जब आप लोकल्स को क्या कहते हैं इस पूरे स्टेशन के बारे में? वैसे थोड़ा सा इसमें ये बताना चाहता कि बिकॉज एक सिक्योरिटी का एक इश्यू जरूर रहता है कि हम बहुत ज्यादा मतलब हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं जब किसी सिविलियन को या किसी अननोन को हम अलाउ करते हैं कैंप के आने के लिए, तो वो हमारे लिए जरूर मुद्दा रहता है। लेकिन अदरवाइज जैसे मैं आपको बताऊं, अभी करीब 2-3 महीने पहले हमने यहाँ पे एक करीब 35 सरपंचों को बुलाया था आसपास के गांव के। अच्छा। उनके साथ हमने इंटरेक्ट किया, उनसे हमने बातें की, उनकी दिल की जानी, हमने अपने मन की बातें बताई। उन्होंने ये सब स्टेशन भी आके देखा, बहुत खुशी हुई लोगों को इस चीज से हुई, क्योंकि वो पहले नाम सुना करते थे। यहाँ आने का मौका, बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेज ही पहले, इससे पहले BSF रहती थी, उसके बाद अब CRPF आई है। तो नेचुरली उनको भी बहुत प्राइड फील होता है कि ये कैसा स्टेशन है। जानते हैं रडार स्टेशन है, लेकिन जब देखते हैं तो और एक गर्व का एहसास होता है। तो मतलब बहुत खुशी मिलती है। अगर आप कहें, जैसा पूछ रहे हैं कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर मैं 2 लाइन न कहूं तो शायद बात पूरी नहीं होगी कश्मीर वैली की, कि गर फिरदौस बर रुए अमियस्तो 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 अमियस्तो, ये स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्ग है। और इस स्वर्ग की जो ब्यूटी है अब और बढ़ती जा रही है, वो खूबसूरती निखर के आ रही है। मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा जो जंग लग गया था वो जंग हट रहा है, खूबसूरती बढ़ रही है इस जगह की। लोग पहले भी खूबसूरत थे, आज भी खूबसूरत हैं, बस थोड़ा सा कहीं एक कम्युनिकेशन गैप कहीं हो जाता है कई बार, तो वो हट रहा है और चीजें बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं। सौहार्द का माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब हमने ये प्लान किया कि आपके बटालियन में हम आएंगे, तो ये कहा गया था कि चरारे शरीफ आना पड़ेगा, जो चदूरा क्रॉस करके आना होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन रावत जी से ये बात कह रहा था कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि 2 बार सोचना पड़ता था कि चदूरा से अगर किसी को निकल के आना हो तो मुश्किलें बहुत थी, और कहीं ना कहीं ये था कि स्वागत करने के लिए कुछ और थे, उसमें फूल नहीं होते थे स्वागत करने के लिए, पत्थर होते थे स्वागत करने के लिए। अब चीज़ें बदल रही, क्योंकि करीबन 30 से 40 मिनट हमें लगे एयरपोर्ट से यहाँ आपके बटालियन पहुँचने को, जो पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। काफ़ी चीज़ें बदल रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, ना पहले लोग खराब थे ना आज खराब है, पहले भी बहुत अच्छे थे, आज भी और अच्छे हैं। बस सिर्फ थोड़ा फ़र्क ये हुआ है कि चीज़ों को समझने का, हम अपने पर्सपेक्टिव को जब बताते हैं, उनके सामने जाके बातें करते हैं उनसे, तो वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और अब चीज़ें बिल्कुल बदल रही हैं। और जो जैसा आप चडूरा का जिक्र कर रहे थे, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। मैं 2019 में जब एब्रोगेशन हुआ था 370 का, तो फॉर्चुनेटली आई वॉज कमांडिंग वन एडॉक बटालियन हियर एंड आई वॉज इन बडगांव ओनली। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर देखे हैं, और आज मैं फॉर्चुनेट हूँ और बड़े फ़ख्र के साथ और बड़ी खुशी के साथ कह पा रहा हूँ कि आज उन बच्चों को मैं वेव करते हुए देखता हूँ, सैल्यूट करते हुए देखता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को, हम लोगों को। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, सबके दिल में एक जज्बा है अपने देश के लिए, एक प्रेम है, और हमारे लिए सच्ची बात और कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज इसी के लिए तो हम लोग यहाँ हैं कि सब जगह एक अमन हो, सुकून हो, चैन हो, और सब एक प्यार की फिजा में सब रह सके। तो वो देखने को मिल रहा है। In fact, you know, Abhishek and Major Gaurav Arya, what we forget is behind the smile of Commandant Om Hari and several others here, there have been several challenges, and for those who have been in the valley for several years put together, things are really changing on the ground, and that's exactly what we wanted to also highlight, because had it not been for the multi-agencies working here, not just the army, the paramilitary, all have had their own sacrifices. In fact, Abhishek, in a short while from now, here at the battalion, we are lucky we have come at a time when the training exercises are also on. So our viewers will get an upfront, up close
idea of how the training really takes place, from the firing demonstration to several other things which encompasses their overall training. So what really goes for a CRPF Jawan really training? In a short while from now, we'll go to that training field and we'll show you what's really happening, how do the Jawans really train. All of that live on Republic TV. All right, thank you so much, Shawan, there, bringing us that live report on the ground in Budgam at a CRPF training center and a radar center, and giving us details of how the CRPF is at the vanguard of taking care of the insurgency in Kashmir. Remember, viewers, those were CRPF paratroopers that were targeted in Pulwama, leading to the martyrdom of 40 plus, and which subsequently saw India carrying out the Balakot air strikes. And Shawan there bringing us those pictures. Thank you so much, Shawan. And I believe we have to take a short break on that note, and then we continue. Okay. So we have, in fact, we have our next guest as part of our Proud to be Indian series, and that's Devendra Jhajaria, Paralympic champion. All right, so we are trying to find out exactly how we move next. We are fixing the guest. Shawan there bringing us that report from the CRPF camp. I go to Major Gaurav Arya. In fact, Major, we were discussing about whether this parade is really required or not. You raised that point. In fact, some people sort of question the need or the imperatives of having this expensive military parade in a democracy, when we could have other priorities. But I thought, occasions like the Republic Day, there are days when India has to project both its soft power and hard power. And this Republic Day parade, as it has shaped up, really gives both together for the world to see. And I think there's nothing wrong, if we can really afford it, to be telling the world that, and of course remember, all the soft power of the world really stands on your hard power. Had it not been for the Uri surgical strikes and the Balakot air strike, Major, you think that Pakistanis would have lied low and terrorism would have been contained in the manner it has been done in the valley? So obviously, hard power projection is integral to a state preserving its sovereignty. Absolutely, Abhishek, you're right. You're bang on the button. Actually, it is hard power. Soft power comes next. And I'll just like to tell you that, right after independence, immediately after independence, the government of the day thought, and I don't blame them, that was their thinking at that point in time, that you don't need the Indian army, you don't need the armed forces, and the police are sufficient for local law and order level issues. 8 weeks after we got independent, Pakistan attacked us in Kashmir. We still thought we didn't need an army. Gaurav, and in 1962, Gaurav, China attacked us. I hate to come in here. It's a fantastic conversation, but we'll just pick that conversation a little later. Yeah. Niranjan has a very special guest joining us right now. Niranjan, you're joining us from the newsroom. Who's that special guest? Why don't you take it over and introduce who we are talking to next? Yeah, we'll just, have Rishab Shetty joining us live right now. We just had him live. I think he's just going to, just be live with us any second now. He's joining us on Zoom. And today, as we, we've had some fantastic citizens of the country join us live from across different fields. You had Anand of Super 30, an educator who teaches the underprivileged. We had some of the most distinguished men and women from our armed forces leading the contingents join us live, and very special guest now live with us, Rishab. Rishab, happy Republic Day to you, and Rishab Shetty needs no introduction. He's an actor. Happy Republic Day. Happy Republic Day, Rishab, and thank you for joining us on this special broadcast. Just to tell our viewers a little bit about Rishab Shetty, he's a Kannada actor. He's a Kannadiga, and his movie Kantara is being spoken about across the world. And at a time when Indian cinema is being celebrated across the world, very, very proud of the kind of work people like Rishab Shetty are doing. And Kantara has been a super hit. Deepthi, Major Gaurav Arya, Abhishek. And and I'm a little biased on this one because I'm from Karnataka, and I've seen the kind of movies that were made earlier and the kind of movies that are now being made.
by filmmakers, especially in the South. I don't think we need to talk more about that. The whole world is now talking about it. Rishab, first of all, just before you came in, we were live from Kashmir. You saw our armed forces, men and women who work day and night to keep our country safe. I wanted to first get your thoughts on this Republic Day, and then let's get started with the conversation. Your message to our brave hearts at the borders first, Rishab. डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा एक मॉरल सपोर्ट भी है हमको. हम इधर एक सेफ फील कर रहा है क्योंकि उधर बॉर्डर में इतने एक सिक्योर हो रहा है हम लोग. सो उन लोगों का जो एक बलिदान और उन लोगों का जो काम कर रहा है, सो इसीलिए वो हम लोग उनको रेस्पेक्ट करना है. सो नॉट ओनली ऑन दिस ओकेशन, तो हर दिन ऐसा एक हम फील करना चाहिए. Yeah, absolutely. Rishab, why did you make a film like Kantara? I mean, we all watched the film. We were all blown by the kind of films that are being made now. And Kantara especially, why don't you tell our viewers, it's the first time that we're speaking to you on Republic TV. Tell us more about Kantara. One takeaway for us was about the cultural rootedness of the film, the stories that you tried to bring from the folklore and the originality, which shows why we need more of such films to be made today. Yeah, definitely. फिल्म का एक कैपेसिटी है. हम कुछ भी कह सकते हैं उधर. हमारा जो रूटेड कहानी हम बता सकते हैं. तो हम एक कमर्शियल फिल्म भी कर सकते हैं, ऐसा एक एक्शन फुल पैक्ड फिल्म भी कर सकते हैं. लेकिन हम भारतीय होके हमारा कल्चर, हमारा रिचुअल्स, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, ये सब दिखाने का एक बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म भी है फिल्म. सो लोगों को हमारा कल्चर क्या है, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या है, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है. हमारा रूटेड कहानी क्या क्या होता है, हमारा फोकलोर क्या है. सो ये इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर. सो वो मैं सोचता हूँ. तो हर बार हमारा देश का, हमारा गांव का, हमारा राज्य का, हमारा लैंग्वेज का कहानी बताने का ज़्यादा मन करता है मुझे. तो आगे भी मैं ऐसा ही कहानी बता के जाता हूँ. Fantastic. I mean, that's one way of looking at it, Rishab, and I think that's the only way of looking at it. Looking at how the cinema world is moving today. And let me get in my other colleagues as well. We have Major Gaurav Arya, who's our in-house strategic affairs expert and consulting editor. Dipti and Abhishek also joining us. Dipti and Abhishek and Major Gaurav Arya. One of the reasons why we decided to call Rishab today is to discuss why we are proud to tell our stories. And Rishab had this fantastic line just now. He said, "I am proud to talk about my culture, my heritage, my village, my folklore." And I think this is the winning formula today. You know, Rishab, when we speak to people from the industry, people with success stories, they tell us one thing. They say, listen, man, we are successful because we don't work on projects. We don't work on, making a 100 crore movie or a 200 crore movie. No. It's not a project for us. It's love, and it's telling stories from the ground, which is the reason why these movies are doing well. Do you believe in that? Do you think the project approach works, or do you think this approach of being original and telling stories works? तो आपका जो ये प्रोजेक्ट का जो बता रहे हैं, वैसा फिल्म्स आप बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री का फिल्म भी देख सकते हैं, हॉलीवुड में भी देख सकते हैं. लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा गांव का कहानी हम बताते हैं, वो सिर्फ हमारे गांव में मिलता है. वो रूटेड स्टोरी हम लेके आके बोलना चाहिए. सो लोगों को पेश करना चाहिए. एंड आजकल के जो बच्चे लोग हैं, उन लोगों को दिस जनरेशन शुड नो अबाउट दैट. एंड हमारा कल्चर क्या है, हमारा मतलब जो इंडियन होके जो हमारा रूट में क्या क्या है, ये बताना बहुत ज़रूरी है. लोगों को वो ज़्यादा कनेक्ट होता है. क्योंकि कांतारा जैसा एक फिल्म, तो मैं भी सोच नहीं था कि ये हिंदी में भी चलेगा और एक पैन इंडिया बनेगा. ये मैं सोचा नहीं था. मतलब सिर्फ कन्नड़ा में करना था मुझे. कन्नड़ा में रिलीज किया. बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, तो इस जो लोगों की वजह से ये पैन इंडिया स्प्रेड हो गया, पैन इंडिया भी रिलीज हो गया. लेकिन मेरा एक कोस्टल कर्नाटक का, एक मंगलोर का एक कहानी को लेके आके पेश किया था. लेकिन पूरे भारत में हर गांव में ऐसा कहानी है, ऐसा रिचुअल्स है, ऐसा बिलीफ सिस्टम है. सो वी आर ऑल सेम. लेकिन हमारा जो वे ऑफ लाइफ थोड़ा अलग रहता है. मे बी कॉस्ट्यूम्स और लैंग्वेज, बिहेवियर और फूड कल्चर, ये थोड़ा अलग रहता है. लेकिन जो कोर में है वो सबका एक ही है. वो ज़्यादा लोगों को कनेक्ट होता है. Absolutely.
My colleagues Okay, Abhishek and Niranjan, Vicky you know, have a by the question. way, Rishab has better Hindi than you, so perhaps I should be asking this question in Hindi only. Rishab, हाय करो। देखिए, ये कहानियां तो हमारे पास सदियों से रही हैं। आप जो कांतारा में अपनी कहानी लेके आए हैं, एक राजा था और जिस तरह से कहानी शुरू होती है, पर जो बदला है मेरे ख्याल से वो ये बदला है कि आपके पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, आपके पास थोड़ा पैसा है, अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू का। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जुड़ा हुआ है पिछले कुछ दशकों में भारत का जो दिशा बदला है, भारत की जो दिशा बदली है। वी हैव मनी, वी हैव टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड in the production values or the kind of production we have, and that is why our global reach has improved. Do you think that has also played a role in how India is telling its stories around the world? Definitely one of the way. And आज जो पैंडेमिक के बाद जो OTT प्लेटफॉर्म के वजह से जो रेवोल्यूशन हुआ है, लोगों को बहुत डिफरेंट मतलब देश का और लैंग्वेज का, वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर मिला है। सो इसी की वजह से लोगों का टेस्ट बदला है और रियलिस्टिक कहानी देखना चाहते हैं, रूटेड कहानी देखना चाहते हैं। तो वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म की वजह से भी वो चेंजेस हुआ है। तो आज आपके पास जो पैसा है, बहुत बड़े बजट है, वो ऐसा भी फिल्म कर सकते हैं आप, लेकिन लोगों को वो कहानी कनेक्ट होना चाहिए। तो उसके ऊपर ये बजट का कोई लेना देना नहीं है। आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो लोग पसंद किया तो ग्लोबली जाएगा वो। ऋषभ, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मतलब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे कि निरंजन की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अभिषेक आपकी भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी ऋषभ की अच्छी है। तो कोई तो रीजन होगा कि आप मतलब क्या अब हम ये देखेंगे ऋषभ अब हम ये देखेंगे आप हिंदी में और ज्यादा मूवीज बनाएंगे, और आपकी अच्छी हिंदी के पीछे राज क्या है? ये पार्ट 1 है ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऋषभ ये है कि इस समय एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि क्या बॉलीवुड के पास अच्छी स्क्रिप्ट्स है, नहीं है, किस तरह की स्टोरीज है, और जिस तरह फ्रॉम द सोइल, चाहे वो RRR हो, चाहे वो कांतारा हो, हमने देखा है कि फ्रॉम द सोइल जो मूवीज आ रही है ऋषभ, वो वाकई लोग बहुत पसंद करते हैं। जो कहा जाता है कि ओरिजिनल है, आपकी मिट्टी की खुशबू उस तरह की एक मूवी में आती है, वर्सेस शायद जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है ऋषभ बॉलीवुड का कि आप एक फॉरेन लोकेशन पे चले जाइए, अच्छे डांस सीक्वेंसेस कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि व्यूअर्स की पसंद भी अब बदल रही है और उसके हिसाब से शायद बॉलीवुड को भी नए प्रयास करने चाहिए ऋषभ? जो पहला प्रश्न था वो मैं आंसर कर देता हूँ, छोटा आंसर है। मैं एक कनाडिगा होके, एक प्राउड कनाडिगा होके मैं कनाडा में फिल्म करना चाहता हूँ, और वो कंटेंट ग्लोबली जाएगा तो यूनिवर्सल है, तो मैं लेके आके हिंदी में भी वो रिलीज कर देता हूँ। तो ऐसा तो अभी लैंग्वेज का बैरियर गया, तो लोग वो हटा के अभी फिल्म को ऐसा इंडियन रीजनल फिल्म जैसा देख रहे हैं, तो ऐसा एक ओपननेस आया है। तो इसलिए बहुत आसान है हमारा कहानी लेके आके पेश करने का। तो मेरा प्रेफरेंस कन्नड़ा फिल्म करना, और हिंदी में भी डब करके आके मैं रिलीज कर सकता हूँ अभी। तो उतना प्यार और सपोर्ट दिया है लोगों ने। एंड सेकंड क्वेश्चन, सी, एक फिल्म इंडस्ट्री होके उधर एक बैलेंस होना चाहिए। से ओनली कमर्शियल फिल्म्स या ओनली कंटेंट बेस्ड फिल्म्स ये नहीं चलेगा। अगर ज्यादा दिन कंटेंट फिल्म आया, लोगों को बोर हो जाएगा कि ये यार ये देख के पुरानी कहानी देख के बोर हो रहा है करके। अगर ऐसा कुछ भी बोर नहीं होना चाहिए। एक कमर्शियल फिल्म है, एक फॉरेन लोकेशन, डांस नंबर, एक्शन सीक्वेंस, वो भी ज्यादा बोर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा बैलेंस करना चाहिए। जो कमर्शियल फिल्म भी करना चाहिए, वो ऐसा भी एक ऑडियंस है कमर्शियल फिल्म देखने वाले। डांस नंबर चाहिए, बड़े बड़े एक्टर्स चाहिए उसमें, और कंटेंट बेस्ड फिल्म देखने वाले ऑडियंस भी है, उन लोगों को भी ट्रीट करना चाहिए। एक ब्रिज सिनेमा भी आना चाहिए। जो ये क्या है ना, वो अर्ली 90s तक पूरे भारत में हर इंडस्ट्री में वो एक बैलेंस था, लेकिन लेटर अर्ली 90s के बाद जो चेंजेस हुआ, ज्यादा कमर्शियल फिल्म हो रहा है, वैसा कर रहे हैं। तो वो एक ना, एक तरफ का जो सेक्टर था ऑडियंस, वो लोग फिल्म देखने का ये कल्चर भी गया उधर। तो लोग थिएटर आने बंद किए हैं, इसलिए बहुत सारे सिंगल स्क्रीन क्लोज हुए हैं, मल्टीप्लेक्स ज्यादा हो गया। तो अभी हर तरीके, हर जॉनर देखने वाले लोग हैं, हर लोगों को भी ट्रीट करना चाहिए हम। तो वो, लेकिन उसमें एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए।
जो आप कमर्शियल फिल्म लेके आ रहे हैं उसमें भी एक अच्छा कंटेंट लेके आओ, अच्छा मैसेज लेके आओ, और एक पैरेलल फिल्म भी कर रहे हैं उधर भी एक कमर्शियल एलिमेंट लेके आओ, तो ऑडियंस को एंगेज होना बहुत जरूरी है. Okay, Rishab, now all my fellow anchors were making fun of my Hindi, and each one wanted to compete with the other. No, listen to this. नहीं ऐसा है, ऐसा है अभी मैं उनको बीट करूंगा एक क्वेश्चन के साथ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಈಗ. ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್. ओके हेली. तो मेरा हिंदी का सीक्रेट ये है कि मैं अंधेरी वेस्ट में 2008 में एक प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय का काम किया था. प्रोड्यूसर का एक ड्राइवर था मैं. तो उधर 3-4 महीने में काम किया, तो ठीक से पगार नहीं मिला, मैं भाग गया वापस गांव आया. तो इसलिए थोड़ा हिंदी सीखा मैं. रिलीज होने के बाद कांतारा रिलीज होने के बाद इंटरव्यू देख के मेरा हिंदी थोड़ा इंप्रूव हो गया. ಸೂಪರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ದರ್ಶಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದರ್ಶಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಇದೆ. Thank you, Rishab. Fantastic. Good to have you on Republic TV. Niranjan, all the very best, Rishab. I understood this Kannada. I think Rishab was congratulating every Indian on Republic Day. I think I got it right. Yes, sir. Come on, Abhishek. That's not rocket science. Okay, we'll take a short break. Rishab, thank you very much. Fantastic. We'll be in touch. Bye. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you. Bye. Back to you for now. Let's take a short break and come back with the live coverage. We're going across straight to Srinagar next, where at Lal Chowk, the largest tricolour is being unfurled. Stay tuned, you're watching a special broadcast on Republic TV. Roundup of how the country is celebrating Republic Day today. As Bihar gears up for the Republic Day, Bihar's Vidhan Sabha in Patna was illuminated with tricolour lights last night. Vidhan Sabha and other government buildings in Jaipur were also illuminated with tricolour lights ahead of Republic Day. In Lucknow, the Vidhan Sabha, Lok Bhavan and Charbagh railway station were illuminated with tricolour light ahead of Republic Day celebrations. Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus and Mantralaya in Mumbai were also lit up with tricolored light ahead of Republic Day. Even suburban near C-Link and Collector Office were illuminated last night. Kolkata geared up for the 74th Republic Day celebrations as Raj Bhavan was illuminated with tricolour light. National capital geared up for Republic Day celebrations as the Qutub Minar and Supreme Court and other buildings were seen illuminated with tricolour. A band show meanwhile was organised ahead of Republic Day as Rajasthan city was seen illuminated with lights. A mesmerising dance performance on the national song was seen at the Delhi airport, setting the mood to celebrate the joy of being a republic. Top headlines at 6:30. The nation marks 74th Republic Day. President Murmu to hoist national flag at 7:30 a.m. Countdown to Republic Day parade. Over 65,000 people to witness Grand Parade at Kartavya Path. Nation salutes its heroes on 74th Republic Day. Stand by for Republic special broadcast at 12 p.m. Largest crew of reporters on ground for the largest coverage on the 74th Republic Day.
106 Padma Awards announced 6 Padma Vibhushan, 9 Padma Bhushan and 91 Padma Shri Awards. Big move by the United States announces to provide 41 Abrams tanks to Ukraine. टीएसडी कब कंट्रोवर्शियल बन गई? टीएसडी की बेसिकली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई टाटरा से, जब जनरल वीके को पैसा ऑफर टाटरा बिक रहा था, इट वाज पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट. All right, welcome back to our rolling coverage of Proud to be Indian and to Naya Kashmir. Talent is blooming in the valley. Here is more about Anam Nasir, who is the newest rapping sensation. And then, of course, we come back to engage with her live. She's joining us live. This is Anam Nasir, Kashmir's newest female rap sensation. Anam, who goes by the stage name Annie, has been rapping since she was 7 years old. It started off as just a hobby, then turned into a profession. In 2021, Anam Nasir uploaded the first video on her YouTube channel, and after that there was no looking back. Initially, the young rapper faced social opposition, but her family's encouragement pushed her ahead. Anam is in one of the growing group of women of the Kashmiri Valley who have demonstrated their ability in the world of music. India is proud of Anam. Bureau Report, Republic TV. And the phenomena called Anam is joining us live on this edition of the show. Anam, thank you so much. You are our next guest here on Proud to be Indian series. What you're doing, Anam, is not easy. आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी भाषा में जवाब दे सकती हैं और रैप में जवाब देंगी तो और भी बढ़िया होगा, क्योंकि आपका जो रैप का स्टाइल है, many people say, Anam, that is very different. You know, you're looking at a lot of rap in Bollywood these days, but आपने जो किया है, especially आपके अपने बैकग्राउंड से challenges को देखते हुए, Anam, कितनी आसान, कितनी मुश्किल जर्नी थी, कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे और कब आपने अपने रैप की शुरुआत की, Anam? So, hi everyone, myself Anam Nasir and I'm from Kashmir. Basically rap में कुछ आइडिया नहीं था पहले करने का कि मैं रैप हमेशा के लिए करूँगी या इसको एज अ हॉबी रखूँगी या इनटू प्रोफेशन इस आगे कन्वर्ट करूँगी. सो बेसिकली मुझे 7th स्टैंडर्ड में बहुत इंटरेस्ट आया इस रैप फील्ड में. सो उसके बाद आई ट्राई टू कन्विंस माई फैमिली, बट उस टाइम पे उन्होंने मुझे ये चीज़ अलो नहीं की करने के लिए बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव सोसाइटी एंड ऑल दैट. उन्होंने बोला कि यहाँ पे रैप का कुछ इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं है, मतलब सोसाइटी अलो भी नहीं करेगी और कश्मीर में तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए. सो आफ्टर दैट मैंने अपना मैंने पेन को नहीं छोड़ा, मैंने लिखना स्टार्ट किया उसी 7th स्टैंडर्ड से और 10th मेरा क्लियर हुआ. एंड आफ्टर दैट मैं साइफर अटेंड किए, मैंने सम रैप बैटल्स अटेंड किए. उसके बाद मेरे इंटरव्यूज़ होने लगे, मुझे ऐसे रैप में रैपर एनी के नाम से जानते हैं. तो उसके बाद मैंने अपना वीडियो अपलोड किया एंड इट कंटिन्यूज़ टिल नाउ. अनम, जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आप पेन लेके बैठती थी, लिखती थी, तो जब आप पेन लेके बैठती हैं तो क्या ख्याल आता है आपके मन में, किस तरह के विचार होते हैं, किस बारे में आप लिखती हैं? अपने कुछ बताएं, अपने जो आप लिखती हैं उसके बारे में,
और कैसे फिर आप उनको विचारों को शब्दों में पिरोती हैं? जी सो व्हेन आई राइट, मैं वही लिखती हूँ जो मेरे सराउंडिंग में होता है, या जो मैंने खुद की वो स्ट्रगल्स देखी है अपने रैप के तरीके में, या मेरा कुछ भी ऐसा हो अपने लाइफ का जो मुझे बयां करना हो, तो मैं वो रैप के तरीके से बयां कर लेती हूँ। वो मेरी पर्सनल लाइफ हो सकती है, मेरी पर्सनल लाइफ के बाहर हो सकती है, या मेरा हिप हॉप के बारे में हो सकता है, या मैं कुछ भी देखूँ जो भी हो रहा है लाइफ में, दुनिया में, उसके बारे में लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो फिर बस खुद ही फ्लो में हो जाता है वो। अनम, आप जिस तरह बात कर रही है ना, ऐसा लग रहा है ये बहुत सिंपल है, और बहुत डिमांड आ रही है कि आप भी हमें कुछ रैप सुनाए। रिपब्लिक डे का मौका है अनम, और जिस तरह कहते हैं कि फिजा भी बदल गई है, वैली में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है अनम वर्सेस जब आप 7th स्टैंडर्ड में होंगी। अब तो जो आपने देखा है अपने आसपास और किस तरह के लोगों के व्यूज आए, आपने खुद कहा कि फैमिली को समझाने में बहुत समय लगा। अब तो आज आप जिस मुकाम तक पहुंची है ना, उसके बाद व्हाट डू यू फील, व्हाट इज इट योर मैसेज टुडे दैट यू वांट टू शेयर विद मिलियंस ऑफ लिटिल गर्ल्स हु आर वाचिंग यू? सो मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपने टैलेंट को दबाओ मत। मतलब अगर कोई भी टैलेंट है आप में, चाहे फिर वो रैप के तरीके से या म्यूज़िक के बाहर है, तो उसको दबाओ मत। सबसे पहले अगर फ्रीडम मिलती है तो इट कम्स फ्रॉम आवर फैमिली। जब तक हम अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर सकते, तब तक हम खुद को भी अच्छे से मतलब फ्रीडम के सिनेरियो में नहीं देख सकते। सोसाइटी का क्या है, अगर कुछ भी करेगी लड़की उसमें भी उनको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले फ्रीडम अपने घर से मिलता है। अगर हम अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए इतना हमारा विल इतना स्ट्रांग होगा, या हमारा टैलेंट इतना स्ट्रांग होगा, तो हमारे घर वाले हमें समझेंगे और हमें अंडरस्टैंड करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। तो फिर हमें सोसाइटी का बिल्कुल भी हमें अफेक्ट नहीं करेगी वो चीज़। और अनम, डिमांड फिर से आ रही है अभिषेक, एक रैप आप सुनाएंगी, रिपब्लिक डे का मौका है। आपका कोई भी फेवरेट या सबसे पुराना रैप, या ऐसा कोई रैप जिसको लेकर आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिला हो, कुछ भी डिफरेंट अनम हमारे व्यूअर्स के लिए? ओके, सो ये 3 लैंग्वेज में, कश्मीरी, इंग्लिश एंड उर्दू। सो कथ वन हब कित कन वन कलम चम सत बे पका मोन मन वुच मुचम खाब अन गोट सपर मोज रुजम पका सत तेम दिचम तन बिलखा बुरुका बे रुजुस पकान कलम चम सत रगन मज हिप हॉप वना हकीकत से बासा आसान वुच अच खोल नकली दुनिया मज बसान वनान चम लोग गसकार कारोबार रैप दिन क्या वना बनक से बेकार ब वना इमन लुका नेरु करू पनुकार गर मज बेकार इमन दस वथ नार वना ब रैप वन कशर जबान मज बूजित से खोजक पत वनक से जहानस नकली इंसान खस खस जहानस बिलखा हकीकत में खोज जमानस बिलखा तूफान नारक बबकान मियन कलम चमशाल मियन लुक दिवा मिसाल मैं कुरमुचु कमाल कुशुर है पॉप एंड गड्स मशाल I just want to fix that, I just want to spit that, I'm trying to be classic, give me a clap, let me spit the facts, you're gonna know when I'm gone, bitch you can see, Annie on the throne, I'm at my own, you fly like crow, I'll break your bones, I got this, I'm a fighter alone, I'm a fighter alone. मैंने सीखी है ज़िंदगी ऐसे बितानी ना जानी ये खेल आसान, मैंने देखा है कैसे ये कहते हैं अपने और पीछे हैं करते बदनाम, देता ज़माना है ताने क्यों मुझे क्यों समझे ये खुद को महान, मैंने देखा है रातों में खुद को यूँ टूटते रही ना ऐनी आसान, अब मिला सहारा कलम से यूँ मुझे हाँ छोड़ूँ मैं अब इसको क्यों, तुम बोलोगे काफिर मैं सुनती ही जाऊँ हाँ छोड़ूँ मैं रैप को क्यों, शीशे में खुद को यूँ देखा है मैंने हर पल यूँ आंसू बहाते, माँ तेरे सिवा कोई नहीं आया बताने हम जाने थी कैसी वो रातें, मैंने पी डाले अपने ये आंसू, हाँ ली जो है अब मैंने सांसें, हाँ खुद को जो अब मैं तराशूं, मैं करती हूँ खुद से ये बातें, न जाने थी कैसी वो साजिश, हाँ करती मैं खुद से अब वादे, अंधेरे में देखी हकीकत, रब मेरे तो उनको सजा दे। पीस आउट, थैंक यू। Thank you so much. That Fantastic. So much pain, angst and fight there. Anam, थैंक यू सो मच। आप आशा करते हैं आप सफल रहे और आप जो मैसेज देना चाह रही हैं और जिनको मैसेज देना चाह रही हैं, थैंक यू सो वो मच, पहुंचे वहां तक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस रिपब्लिक डे अनम। Thank you so Abhishek, much. you actually said thank you to her, so but I much. wanted Thank to you. ask how many words. I mean, ये कैसे इतने speed से सब लिखते हैं अनम? You know, you all do make us proud, and like I said, Abhishek, you know, the kind of league that you're looking at is tremendous. The league is tremendous, अनम। आपसे दोबारा कभी बात करेंगे और like we said, more power to you. आप अपने शब्दों के जरिए इसी तरह Thank you so much. आप लोगों को एंथ्राल करिए, फाइट Thank करिए you. सिस्टम से, क्योंकि बिल्कुल ये जी। सिस्टम आप ही की वजह से है।
Let's quickly shift gears now. We will continue to get you more guests about Proud to be Indian series, but also our promise to viewers that we'll take you across to different borders in the country. That is our colleague Priyanka. She's at the Wagah border. Priyanka, can you hear us? बरसों से इच्छा थी, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आपको देख के भी लग रहा है क्योंकि आपने इतना सारा पेंटिंग वगैरह भी किया है, पूरा तिरंगा आपका देख के मैं बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो गई। All right, thank you so much for speaking to us. So this really is the sentiment of the people, and everywhere you see, it's a sea of the tricolors that are visible everywhere in this particular border area, Wagah border, of course. And this is where people usually come. There are tourists from across the country, in fact, that have come here. Everywhere we see, everywhere we pan our cameras, there is a sea of the tricolor that can be seen at this particular area, at this particular juncture of the Wagah border as well. In fact, let's try to get in a word from several other people. आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए? महाराष्ट्र, पुणे से आए, पुणे से महाराष्ट्र। यहाँ आज के दिन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, भारत को आज सेलिब्रेट करने का दिन। बहुत बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे हम, और कल हम जोश के साथ करेंगे। और कल भी हम आए थे यहाँ पर, पूरा खचाखच भरा हुआ था। आज भी पूरा ऊपर का भर जाएगा, पूरा भरेगा ऊपर का। कल यहाँ पर 25-30 हजार लोग थे वहाँ पर। कैसा महसूस होता है यहाँ पर आके? पाकिस्तान यहाँ पर ही है, भारत एक भारतीय होने का महसूस है। तो भारत तो तगड़ा कंट्री है, बहुत बढ़िया देश है। भारत जय हिंद, भारत माता की वंदे, जय हिंद, भारत माता की। Essentially, this is what really is the sentiment of the people who have gathered here. They are waving the tricolor, all of them saying that they're celebrating our security forces today. Today is the day for them to come out and celebrate the country and its citizens as India, in fact, becomes a global superpower. And that's exactly what the aim has been, and that has been reverberating on the ground right here at the Wagah border as well. With video journalist Mahendra, I'm Priyanka Sharma for Republic. Wagah border, and of course we'll come back to Priyanka because the beating the retreat ceremony as it happens at Wagah Atari border is just building up. And we had Priyanka Sharma reporting live, bringing us those pictures. Excited crowd. Remember, the beating the retreat ceremony again is something which is almost like a once in a lifetime kind of moment if you can be there. And the excitement, the energy that you see, we will come back to it because it happens at around 5 p.m. But let's go to Kashmir, back to Kashmir. And our senior editor Shravan Sen, who's joining us live again from a CRPF camp. Shravan, I believe you're showing us a live training of the CRPF troopers. Over to you. Well, absolutely, Abhishek. What we're going to see over the next 20 minutes, I'll request all our viewers to tune in right now and stay with us, because what you're going to see is something not often do you actually see, because just behind me is the quick action team of the CRPF. What exactly is the quick action team? Remember, in a place like Kashmir, where several terrorist activities have taken place, remember, these camps have to be very active because this place is not very far from the border itself. Also, some of those hotbeds of terrorism like Pulwama are all the bordering areas, and that's the reason why, if you see, there are several inputs that keep coming, and there needs to be a team which needs to be on their toes, and that's exactly what the quick action team does. The program is going to begin right now. The demonstration begins now. This, what you're going to see, is the physical training. Over the next few minutes, ladies and gentlemen, what you're going to witness, not just the physical training that takes place, the unarmed training that is going to take place. I'm also going to bring in Assistant Commandant Manish, who's going to just take us through. Assistant Commandant Manish, this training, we'll go into the details of it, but first up, what's lined up for our viewers? What is it that they're going to witness today? See, training in our force is an important part in our life. It's not a one-time process. We all are trained soldiers, but on daily basis, to keep ourselves fit, to keep ourselves ready for any contingency, we do daily training skills. And right now, we'll be showing you some of the training programs. This is our QAT team. This is how
This is vertical rope. This is how we do on daily basis in the morning. So, as I understand, Assistant Manish, ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये हर रोज होता है और अब विंटर के टाइम में तो अलग तरीके की फिजिकल ट्रेनिंग होती होंगी. As I told you, training is not a one-time process. Being in force, आपको डेली ट्रेन करना है. ट्रेनिंग के साथ बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज, कैरेक्टर बिल्डिंग. सो इन केस अगर वेदर अलाउ करता है, जैसे आपने देखा पीछे ग्राउंड आप हमारा अभी बर्फबारी है, स्नो है. अगर वेदर अलाउ करता है तो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं. वेदर अलाउ नहीं करता तो कैसे हम छोटी से छोटी जगह पे कम से कम टाइम पे अपने सोल्जर्स को ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें मॉड्यूल बना के रखते हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो. अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अभी वर्टिकल रोप है, ये हमारी क्यूटी टीम का पार्ट है. और इसकी कुछ पीरियड्स होती होंगी कि जब ट्रेनिंग होती होगी, कौन से टाइम से ये ट्रेनिंग शुरू होती है और कितने टाइम तक ये ट्रेनिंग रहता है? मॉर्निंग मार्कर होता है हमारा, जहाँ पर हम सभी बटालियन में जो भी अवेलेबल होते हैं, सभी ऑफिसर से लेके जवान सभी मार्कर में आते हैं. उस टाइम ये 40 मिनट से 50 मिनट का प्रोग्राम होता है. उसमें हम मार्कर के बाद, जैसे मार्कर फिनिश होता है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो रनिंग हो, कार्डियो हो, अदर एक्टिविटीज़ हो. तो वो मॉर्निंग का डेली का हिस्सा है. अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ये पहले हम लोग वर्टिकल रोप ट्रेनिंग जो हो रही है, उसके बाद आई थिंक आई एम टोल्ड दैट ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग ओके, ये वाली जो आगे होने. सो ये अगर पूरे कमांडेंट साहब आपसे अगर ये सवाल करूं कि इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग जो रहता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं और उसी चैलेंजेस को अडेप्ट करने के लिए भी आई थिंक मॉड्यूल्स बदलते रहते हैं. थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से हाउ आर यू चेंजिंग, अडेप्टेशन कैसा होता रहता है? इनफैक्ट जैसा अभी मनीष बता रहे थे कि एक जवान का शारीरिक तौर पे मजबूत रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उतना ही उसको मानसिक तौर पे भी मजबूत होना बहुत जरूरी है. उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनके थ्रू हम इनकी मेंटल स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए उस पर हम काम करते हैं. जैसे एक लव यू जिंदगी का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है, उसमें इंटरेस्टिंग सा नाम, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. तो इसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं जिससे कि कैसे एक जवान अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है, कैसे वो दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पे अपने आप को मजबूत रखे और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकता है. तो इन चीजों पर हम बहुत जोर देते हैं. इसके अलावा मेडिटेशन की क्लासेस हम लोग कराते हैं जो इन फिजिकल क्लासेस से हटके होती है. योगा की क्लासेस हैं वो हम लोग कराते हैं. तो ये सब चीजें क्या है कि जवान को मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग रखती है. फिजिकल में जैसे मैं बताया, अभी मनीष बता भी रहे थे कि सुबह से लेके जैसे सुबह 2 पीरियड्स हो गए जिसमें 80 मिनट्स के तकरीबन ये फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं. उसके बाद फिर फोरनून में ब्रेकफास्ट के बाद में फिर इनकी क्लासेस, व्यापन वगैरह की क्लासेस होती हैं. कुछ इंडोर क्लासेस भी हम लोग कराते हैं, जिन क्लासेस के माध्यम से हमें यहाँ की जो ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है, क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स वगैरह आ रहे हैं, बाकी जो हमारी टैक्टिक्स हैं, जो हम लोग टैक्टिक्स अपनाते हैं, जैसे से मान लो कुछ ऑपरेशंस करने हैं, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करना है, एरिया डोमिनेशन करना है, नाका लगाने हैं, तो ये कुछ हमारे रोजमर्रे के जो हमारी जो ड्रिल्स हैं तो उनके बारे में हम इनको जानकारी देते हैं. तो मतलब हम भी पूरी कोशिश करते हैं पूरे दिन. जैसे अभी हम क्यूओटी की बात करें, ये किसी भी इवेंचुअलिटी में फर्स्ट रेस्पॉन्डर टीम है, या किसी भी सीआरपीएफ के बटालियन में आप जाएंगे, इवन कंपनी लेवल तक, यू विल फाइंड दिस टीम. ये टीम वो टीम है जो मतलब 0 रेस्पॉन्स टाइम है इसका. अगर आप अभी कोई इवेंचुअलिटी हो जाए तो विद इन अ मिनट वो यूनिफॉर्म लगा के हथियार लेके बाहर आपको खड़ा मिलेगा, और दे आर वेल ट्रेन्ड. तो ये चीजें हम इन पर बहुत जोर देते हैं. स्पेशली मतलब किसी भी इवेंचुअलिटी से कितनी जल्दी हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, तो यही उन सब का हिस्सा है. अब जैसे अभी आप देख रहे हैं, फिजिकली दे आर अल्ट्रा फिट लड़के हैं सभी. और यही नहीं, आप ऐसे रैंडमली भी चूज करेंगे तो लड़के फिट ही मिलेंगे, बट इन पे हम ज्यादा जोर देते हैं. और थोड़ा पूरे हर बटालियन में ऐसे क्विक एक्शन टीम रहती है ताकि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स हो या कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट आए कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट कहीं पे इस इलाके में, तो क्या टाइमिंग्स क्या रहता होगा कि आप रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता होगा? डिपेंड करता है. इनफैक्ट जैसा आपने पूछा, बिल्कुल हर सीआरपीएफ की यूनिट के अंदर ये क्यूटी का एक टीम रहती है. हर बटालियन में आपको मिलेगी, इवन नॉट बटालियन, इवन कंपनी लेवल तक मिलेगी आपको.
तो इसमें डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरी कंपनी यहाँ से करीब 32 किलोमीटर दूर है, एक यूसमर्ग एक टूरिस्ट स्पॉट है। से वहां उस इलाके में हम अगर मान लो कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहां पे कोई मिलिटेंट हाइड आउट है या कहीं मिलिटेंट छुपे हुए हैं और कोई ऑपरेशन को हमें अंजाम देना है, तो पहला रिस्पांस होता है वहां की जो कंपनी की जो सिक्योरिटी टीम है वो, प्लस जो सिविल पुलिस का जो एसओजी जो टीम है वो, हम साथ मिलके फिर वहां पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। इन द मीन टाइम यहाँ से जो हमारी सिक्योरिटी टीम है ये भी विद इन नो मतलब वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी रश टू दैट पॉइंट एंड वी ऑगमेंट देम, वी गिव देम द सपोर्ट एंड वी अकॉर्डिंगली कैरी आउट दैट ऑपरेशन। तो इन टर्म्स ऑफ मैं अगर बात करूं कि जो ट्रेनिंग में भी जो बदलाव आप करते आ रहे हैं, ऐसा है कि आप शुरुआत की जो ट्रेनिंग दी जाती थी जवान को, अब में उसमें कई अंतर हो चुका है क्या आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि विद चेंजिंग टाइम्स देयर इज अ नीड कि द जवान्स आल्सो अडैप्ट टू इट? देखो, जहां तक बेसिक ट्रेनिंग का सवाल है, बेसिक ट्रेनिंग उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं, लेकिन बेसिक ही है अभी भी। लेकिन हाँ, उसके बाद जो कोर्सेज हैं, चाहे वो इन सर्विसेज ट्रेनिंग की बात करें हम, फिर उसमें बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स ऐड किए गए हैं जिनमें के जो प्रेजेंट सिनेरियो है, से फॉर एग्जांपल हर जगह के सिनेरियो अलग है। जेएन के थिएटर की बात आप करेंगे, यहाँ जो थ्रेट है वो अलग टाइप की है। अगर आप बात करेंगे से एलडब्ल्यू थिएटर की बात करेंगे तो वहां थ्रेट दूसरे टाइप की है। तो जिस थिएटर में जवान रहता है उसके हिसाब से भी हम उसको ट्रेन करते हैं, कोर्सेज कंडक्ट कराए जाते हैं, और वहां पे कौन सी जो मतलब जो टैक्टिक्स है ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, उन चीजों पर हम बहुत जोर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ अगर आप देखेंगे कि मिलिटेंट्स का जो मूवमेंट है वो एलडब्ल्यू थिएटर की तरह नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी बल्क मात्रा में एक साथ मिलिटेंट्स आ रहे हैं और कुछ ऐसा कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि एक गुरिल्ला टाइप का है, हिट किया भगे, एक दो आदमी आएंगे, फायर किया चले गए। तो उसके हिसाब से हम अपनी टीम को तैयार करते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना को कोई अंजाम न दे सके और उसको हम कैसे ओवर पावर कर सके, तो उसके लिए हम इनको ट्रेन करते हैं। तो ये सब उन्हीं ट्रेनिंगों का हिस्सा है। कमांडेंट साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि सीआरपीएफ कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन माना जाता है कि आप डायरेक्टली आवाम से बात करते हैं। कितनी डिफिकल्टी होती होगी जब आप देखते हैं कि वही आवाम कहीं ना कहीं एक तरफ से जो रिस्पांस एक टाइम हुआ करता था उनका, इट यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट जो अब है। बट चैलेंजेस की अगर बात करें, आवाम से जो चैलेंजेस पहले मिलती थी डायरेक्टली सीआरपीएफ को, हम वो दिन भी याद करते हैं जब सीआरपीएफ हर समय was on the front line, always on attack. Stone pelting होती रहती थी, कई सारे कैंप्स हो, बटालियंस हो, which have basically come under attack. वो दिन भी हम देख चुके हैं। अब वो बदल रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि किस तरह से ये अफेक्ट करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय मोराल को आप बूस्ट रखना जवान के बीच में, जबकि आवाम वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट, बहुत मुश्किल होता था। अब चीजें बदल रही हैं। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं इस बात को कि सीआरपीएफ एक ऐसी फौज है जिसके अंदर मुझे लगता है सबसे ज्यादा अडेप्टेबिलिटी अगर किसी फोर्स के अंदर है तो वो सीआरपीएफ है। किन्हीं हालात में हमारे जवान अपना पूरे मानसिक दृढ़ता को, मजबूती को बनाए रखे, और हम लोग जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं किसी भी थिएटर के अंदर, वो ये हमारी बहुत बड़ी एक खसूसियत है। तो जवान हमारी ट्रेनिंग में, या यूं कहें जो हमारी अपब्रिंगिंग इस टाइप की है कि हम किन्हीं भी परिस्थिति में हम घबराते नहीं हैं, और हालात जो भी हों, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, लेकिन हम अपने गोल पे ध्यान देते हैं। और जो हमारी बुनियाद है, बेसिकली डिसिप्लिन हमारी बुनियाद है, उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। और जवान दिमागी तौर पे फौजी, मतलब हर अधिकारी, एसओ जवान हर तरह से फिट है। कोई भी आप टास्क भारत सरकार में कभी देती है तो आप देखिए आज की तारीख में सीआरपीएफ को आप हर जगह पाएंगे, चाहे जिस थिएटर की बात करें। नेचुरल कैलामिटी होगी तो सीआरपीएफ होगी, कहीं नक्सलिज्म होगी तो सीआरपीएफ होगी, नॉर्थ ईस्ट का कहीं आपने देखा था मिलिटेंसी थी तो सीआरपीएफ थी। आज इस थिएटर में सीआरपीएफ है। बहुत कम टाइम पे, बहुत कम समय, और मूवमेंट भी जिस तरह से, क्योंकि आप एलडब्ल्यू की बात करें तो वहां से मूवमेंट टू डायरेक्टली टू कश्मीर ये भी हो चुका है कई, और बहुत कम टाइम में ये ट्रांजिशन होता है कि कहीं एक तरह से, मतलब डाउन साउथ से लेके अप नॉर्थ कम टाइम पे सीआरपीएफ को मूवमेंट किया जाता है। तो
उसमें आपको नहीं लगता कि कहीं डिफिकल्टीज होते थे कई सारे? देखो डिफिकल्टी तो है, हम वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, बट मानसिक मजबूती इतनी है कि वो डिफिकल्टी हमें डिफिकल्टी नजर नहीं आती है, उसमें हमें वो चैलेंज नजर आता है, फिर हमें मजा आता है उसको करने में, और लगता है कि यस ये हमें एक, और हमें ऐसा फक्र लगता है कि देश हम पे विश्वास करता है, देश चाहता है कि सीआरपीएफ आगे रहे और सीआरपीएफ कुछ करे। तो वो जो जज्बा है ना, जो देश का प्रेम है, वो कहीं जज्बा भर देता है, खून में एक जोश भर जाता है इस बात को सोच के, और फिर हम तैयार रहते हैं कोई भी काम करने के लिए। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, वो है आप कहते हैं मानसिक मजबूती की बात, बट ये भूल जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, उनके भी परिवार है, उनके परिवार के बीच में हर परिवार में जैसा होता तनाव होता होगा, और साथ ही साथ एक बहुत ही चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में वो काम करते हैं। और ये आप जो कह रहे थे लव यू जिंदगी मॉड्यूल जो सीआरपीएफ लेके आ रही है, कितना जरूरी था इसको लाना, क्योंकि हमें एक ही परसेप्शन रहता सीआरपीएफ मतलब एक मजबूत जवान, और इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते थे, हमें नहीं लगता था कि उनके मन में भी वही चीज होता होगा किसी और के साथ जिसके मन में होता होगा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। देखिए ओवरऑल है तो हम ह्यूमन बीइंग, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में है, ये लोग जो जितने भी हमारे जवान हैं, हम लोग हैं, घर की समस्याएं तो सबके अपने साथ है, पर अब निर्भर करता है कि उन समस्याओं को आप अपने वर्क कल्चर में कितना हावी होने देते हैं, आप मानसिक तौर पे कितने मजबूत हैं उन समस्याओं से आप पार पाने के लिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि ऐसे सीआरपीएफ हम लोग हमारे हायर ऑफिसर्स के द्वारा, हमारे हायर ऑफिसर्स के द्वारा इस तरीके के जो मतलब जवान की मानसिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए और उसके परिवार का ख्याल रखने के लिए हमारे डिपार्टमेंट इसका भी बहुत ख्याल रखता है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हमारे वेलफेयर डायरेक्टरेट की हैं जिससे इन जवानों की फैमिलीज का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, इनकी प्रॉब्लम्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। और इसके साथ साथ हमारा जब हम ड्यूटी प्लेस पे हैं तो यहाँ हमारा फर्ज बनता है एज ए कमांडर कि हम इनकी जो मानसिक स्थिति है उसका ख्याल रखें। तो जैसे आप लव यू जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो लव यू जिंदगी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा एक मॉड्यूल, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब ऐसा लगता है कि जान फूंक देने वाली बात किसी के मानसिक ताकत के अंदर, मतलब बंदा हिलता नहीं है, मजबूती। और उसमें कुछ ऐसी मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वो ये अपने जीवन में उतारते हैं और मानसिक तौर पर अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, और इन्हें ड्यूटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इस प्रकार की दिक्कत है वो रहती है बट फील नहीं करते। ये पुशअप्स हो रही है जहाँ पे बर्फ यस, आई थिंक -3 रहा होगा इस वक्त अभी। मैं एक बार असिस्टेंट कमांडर मनीष से भी पूछता हूँ, ये डिफिकल्टीज, ये जो फिजिकल चैलेंजेस है कितने ऐसे कैसे कर सकते हैं और हाउ इज इट पॉसिबल? नो, द फैक्ट व्हाट यू सीइंग राइट नाउ इज अ ट्रेनिंग दैट्स हैपनिंग ड्यूरिंग माइनस टेम्परेचर्स ऑल्सो। मनीष, आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो ट्रेनिंग हो रही है इस वक्त टेम्परेचर्स वुड बी अराउंड 2 या 3 डिग्री, और इसमें ओपनली फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? जैसे आपने बोला टेम्परेचर माइनस है, बट जो एटीट्यूड है और जो हमारा मोरल है वो पॉजिटिव है। चाहे माइनस टेम्परेचर होता है चाहे प्लस पॉजिटिव होता है, तो हम कोशिश करते हैं अपने जवानों को फिट करने का। ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। हमें पता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 महीने बर्फ होती है, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार करना है। हम उसका एक्सक्यूज नहीं ले सकते। पुशअप करना कितना डिफिकल्ट होता होगा? पुशअप डिफिकल्ट होता है बिकॉज अभी स्लिपरी होता है, क्योंकि अब जैसे सरफेस आप जाएंगे तो पूरा स्नो है, कीचड़ है, तो बहुत स्लिपरी होता है, तो उस टाइम पे ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल है। पर जैसे मैंने बोला कि अगर मोरल अप है और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो सब चीज पॉसिबल है। इसके बाद क्या प्लान कर? अपना जो डॉग, जो हमारे ऑपरेशनली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे पास 2 डॉग हैं यहाँ पर, तो उसका जो छोटा सा एक ड्रिल हमने आपके लिए प्लान किया है वो हम आपको शो करेंगे अभी। उसके बाद फिर जो डॉग शो कंप्लीट हो जाए तो देन विल बी शोइंग यूएसी अनआर्म्ड कॉम्बैट। यस, चलिए फिर उस साइड लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। एंड व्हाट यू सीइंग राइट नाउ इज दिस इज द ट्रेनिंग ग्राउंड। जो ये ट्रेनिंग ग्राउंड में जो आप लोग हर रोज ट्रेनिंग करते हैं, और कई सारे यहाँ पे जवान रहते हैं इस साइड। ये भी जवान रहते हैं, अलग अलग बैरक्स, अलग अलग रैंक वाइज मार्क किया हुआ है। तो जवानों की रेजिडेंस भी है, प्लस जो आप पीछे ग्राउंड देख पा रहे हैं, जो ट्रैक बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट 400 मीटर का ट्रैक है चारों तरफ। अगर आप इसको रनिंग मॉर्निंग में करते हैं, अगर आप कल यहीं से सेम ग्राउंड में आते तो शायद आपको ग्राउंड दिखता भी नहीं, पूरा स्नो से कवर था वो। बट आज मॉर्निंग में समहाउ स्नो हट गई वाली स्क्वाड। यस, बीडीडी स्क्वाड। मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि जब ऑपरेशंस होती हैं, और स्पेशली जो क्राउडेड इलाकों में जो ऑपरेशंस होती हैं,
काउंटर ऑप्स जब किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स रहते हैं और कई सारे कॉर्डन्स होते हैं, कॉर्डन एंड सर्च जिसे कहा जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा तो किस तरह से स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसा कि आपको सर ने बताया कि जो एलडब्ल्यू थिएटर में स्पेशली जहाँ पे आईडी का खतरा ज्यादा होता है, बट अभी आपने कुछ टाइम से यहाँ देखा होगा जेएनके में भी आईडीज का जो खतरा है, जो थ्रेट है, वो बहुत बढ़ गया है। तो उसी बेसिस पे हमने डॉग्स को ट्रेनिंग होती है, इनको भी डेली जैसे मार्कर में आते हैं तो डॉग भी मार्कर में आता है, अपने जो उसका हैंडलर होता है वो मॉर्निंग में आता है। तो कैसे उसको जो स्निफ करने की जो उसकी एबिलिटी है वो मेंटेन रहे, कैसे वो ट्रेन करता रहे, उसके लिए भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ बने हुए हैं। ये जो ऑब्स्टिकल्स आप छोटे देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये डॉग के लिए बेसिकली। तो ये वो भी जो मार्कर में मैंने बताया, जो बाकी जवान से लेके अफसर जो ट्रेनिंग करते हैं, तो इसका भी जो अपना ट्रेनिंग मॉडल वो भी कंप्लीट करता है। तो ये भी हमारे जैसे एक टीम का पार्ट है। जैसे आपको मैं अब नफरी बताऊं कि 12 लोग जा रहे हैं, तो 13वां हमारा डॉग है, तो वो भी हमारे ऑपरेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और उसके बिना शायद हमारी टीम इनकम्प्लीट है। और आज की डेट में जेएनके में जो आईडी का थ्रेट जो जैसे मैंने आपको बताया बढ़ गया, तो उसके इसमें इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ये ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ये जैसे आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का भी आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल बेसिकली ये आपको बता रहा है कि कैसे सैल्यूट करते हैं, कैसे वेलकम करते हैं वो ये नमस्ते का, दिस इज हाउ इज डूइंग नमस्ते। आपके ये स्निफर डॉग स्क्वाड में करीबन कितने स्निफर डॉग? बटालियन में 2 अवेलेबल हैं। उसका डॉग हैंडलर है, वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस पे वो फॉलो अप कर रहा है। अगर ये इंस्ट्रक्शंस आप और मैं देंगे तो वो शायद फॉलो ना करें, क्योंकि इनकी भी अलग ट्रेनिंग होती है। डॉग हैंडलर्स जो होते हैं, इनको भी इनके साथ ट्रेन किया जाता है। और हर स्निफर डॉग के खुद के जैसे एक ही सिंगल ट्रेनर रहता है? नहीं, इसके 2 ट्रेनर होते हैं, एक मेन एक असिस्टेंट होता है, 2। और दोनों में से एट ए टाइम एक होता है कि अगर इनकेस कोई छुट्टी पे भी कोई जा रहा है तो दूसरा जो ट्रेनर होगा वो अवेलेबल रहेगा। मतलब डॉग को आप विदाउट ट्रेनर या विदाउट उसके हैंडलर के नहीं छोड़ेंगे। चलो हम लोग इस साइड मूव करते हैं ताकि वी कैन शो द ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। जो इसको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कहना सही रहेगा? इसको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कहना सही रहेगा? हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने बोला मॉर्निंग मार्कर में डॉग भी आता है, वो भी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, ऑब्स्टिकल्स के थ्रू निकलता है। सी ये डेली करता है इसलिए कर पा रहा है, अदरवाइज इन केस अगर आप इसको बीच में जैसे अगर हम अपनी ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो इसका भी उतनी इंपॉर्टेंस है, उसकी रेगुलरिटी की भी। ये वो ऑब्स्टेकल, और कई बार जैसे मैंने बताया कि इनकी जो स्निफिंग की एबिलिटी होती है, ऐसे कुछ केसेस या ऑपरेशंस हैं जहां पे यू ऑल फील दैट कि आपके स्निफर डॉग्स हैव बीन एक्सट्रीमली यूजफुल? ऐसे कुछ ऑपरेशंस जो आपको याद? आई मीन दे आर, जो हमारी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी होती है। जैसे मैंने बोला, हम लोग अगर नाका कहीं पे लगा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट जगह पे किसी कल्वर्ट को सर्च कर रहे हैं, तो ये डॉग स्क्वाड का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो अभी देखिए जैसे इसने कुछ हाइड किया है, जो स्निफ करने की जो मैंने बोला इसकी जो एबिलिटी होती है, तो कैसे उसको ढूंढेगा। और देयर हैव बीन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, बहुत जहां पर एक डॉग ने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई है, जस्ट वो स्निफ कर पाया टाइमली, उस आईडी को डिफ्यूज किया जा सका। सी उसको पता है, उसने स्निफ किया, वहां जाके बैठ जाएगा। इसका ये बैठना ही हमें बताता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। उसके बाद हमारी जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होती है वो जाती है, अगर इनकेस वो आईडी को डिफ्यूज कर सकती है तो उसको डिफ्यूज किया जाता है। सी जो वो सस्पेक्टेड मटेरियल्स, इसको मैंने बोला ना, वो मॉर्निंग का हिस्सा है जो उसको ट्रेनिंग के साथ सुंघाया जाता है, स्निफ किया जाता है, ताकि वो उसको भी यूज टू रहे। डॉग और उसका डॉग हैंडलर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं, मतलब वो एक एज अ फैमिली की तरह रहते हैं। उसकी देखभाल करना, उसको डाइट करना, उसका अगर कोई भी जो चीजें वो खाना खिला सकता है, अगर आप और मैं ट्राई करेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग अनआर्म्ड, इसके बाद हम आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट, जो आप एक छोटा सा हमने आपके लिए डेमो प्लान किया है, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हाउ विदाउट वेपन एक ट्रेन सोल्जर किसी भी मिलिटेंट को किसी भी सिचुएशन से विदाउट वेपन भी उसको हैंडल कर सकता है।
विदाउट यूजिंग कोई उसके पास टूल्स नहीं है और अगर उसको जरूरत पड़ती है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज करना है किसी ऐसे व्यक्ति को, तो कैसे उसको वो करेगा। ये जो पंचेस आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये देखने में आसान लगता है लेकिन जब लगता है तो पावरफुल होता है। तो इसकी भी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारी ट्रेनिंग में। जो हमारी क्रिएटिव टीम है उसको हम वेपन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रेन करते ही हैं, जैसे सर ने बताया मेंटली भी उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। बट ये एक ऐसी स्किल है जिसके होने से विदाउट वेपन भी वो अपने आप को स्किलफुल पाता है कि किसी भी सिचुएशन से वो बाहर आ सकता है। तो ये अभी देख पा रहे हैं आप, पूरा ग्राउंड गीला है, कीचड़ है, लेकिन स्टिल वो मूवमेंट आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए वो एक आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। वो स्टेबिलिटी रहती है बेसिकली, डेफिनेटली। अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए व्हाट इज दैट थिंग दैट यू आप कहेंगे कि एक मंत्र रहता है जो यू हैव टू फॉलो, विदाउट विच इट कैन बी डिजास्टर्स। मतलब जैसे आप कह रहे कि स्टेबिलिटी, द बॉडी स्टेबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एन अनआर्म्ड कॉम्बैट। बॉडी स्टेबिलिटी है, इसमें मूवमेंट्स है, आपके हैंड से लेके लेग सारे मूवमेंट्स है। अगर आपको हाथ से किसी को न्यूट्रलाइज करना है तो कैसे, अगर आपको किक लगानी है तो किक की हाइट भी आपकी ऑलमोस्ट शोल्डर तक जाती है। और ट्रेनिंग एज आई सेड कि एक सिंगल वो नहीं है कि आप सोचे कि ये ट्रेनिंग कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाता है। आपको अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उसमें आप निकलते हैं तो वो एक कंप्लीट आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाता है। ये हो गया आपका अनआर्म्ड ट्रेनिंग कॉम्बैट। नाउ वी आर अप फॉर द फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस। फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में भी अगर असिस्टेंट कमांडेंट मनीष आप थोड़ा बता सके, और वहां पे हम लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग देखने के लिए, बिकॉज और ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग फायरिंग जो डेमोन्स्ट्रेशन रहते हैं, जो ट्रेनिंग रहते हैं, हाउ किस तरह से प्लेस किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस? डेली बेसिस से फायरिंग नहीं की जाती है। फायरिंग एक्चुअली में एनुअल प्रोसेस है, जो एक जवान को एनुअली उसको अपना फायर करते रहना है। और इन केस अगर जैसे मैंने बोला कि क्यूएटी को प्रैक्टिस कराना है तो उसके लिए भी हम फायर कराते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलूं कि मॉर्निंग मार्कर में डेली हम लोग खड़े होते हैं फायरिंग होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और क्या ऐसा क्या चीज बहुत सिग्निफिकेंट रहता है इस पूरे ट्रेनिंग में? बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग जो आप पहले से शुरुआत से करते आए होंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या रहता है? सी वेपन हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। जैसे आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो वेपन भी आपकी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है। तो उस वेपन के साथ कॉन्फिडेंस रखना, उस वेपन पे कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ जो वेपन मेरे पास है, चाहे वो इंसास हो, एके हो, एलएमजी हो या और कोई हथियार हो, अगर उस हथियार पे मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं प्रैक्टिस जब फायरिंग कर रहा हूँ उसको मैं सीरियसली कर रहा हूँ, ताकि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई डिमांड करता है तो हम लोग उससे बाहर निकल सकते हैं। बेसिकली हमारा जो एम होता है वो एक गोली एक दुश्मन। हम कोशिश करते हैं कि जो हम अगर 10 राउंड भी फायर करेंगे तो 10 राउंड टारगेट को हिट करने चाहिए। ओके, मैं एक जस्ट आई वुड आल्सो लाइक टू कम्युनिकेट टू आवर प्रोड्यूसर्स आल्सो दैट वी जस्ट क्विकली गोइंग टू शो दैट द फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड विल then hand it over to the studio. But असिस्टेंट कमांडेंट मनीष, आपसे वापस ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा अगर आप डिस्क्राइब कर सके इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए कि वो क्या देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन जो होने वाला है। प्रॉपर फायरिंग रेंज तो मैं नहीं कहूँगा, बट हमने अपनी बटालियन की प्रैक्टिस के लिए और एयर सेफ के लिए, जैसे मैंने बताया, हमने इसका अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अप्रॉक्स 25 से 30 मीटर का डिस्टेंस है। जो आप फिगर आगे देख पा रहे हैं टारगेट है वो दैट इज फिगर 11। उस पर हम लोग एम करते हैं। अलग अलग फायर होता है, नीलिंग पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन, लाइंग पोजिशन। तो वो आप अभी डेमो में देखेंगे भी कि कैसे हम लोग अलग अलग पोजीशंस में फायर करते हैं। ये जो बिगुल आपने देखा, इसका मतलब है कि स्टार्ट, फायर इज गोना स्टार्ट, और जो जहां पर है वो वहीं पे खड़े हो जाए, अननेसेसरी कोई मूवमेंट ना करे, ताकि फायरिंग रेंज के सामने कोई ऐसी मूवमेंट ना हो कि किसी को कोई क्षति पहुंचे। और जब भी हम कोई फायर करते हैं तो जो हमारी सिस्टर एजेंसीज होती हैं आसपास, चाहे वो पुलिस हो चाहे आरआर हो, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं कि इनकेस उनको ऐसा न लगे कहीं फायरिंग हो रही है। और जब वो फायर करते हैं तो वो सेम चीज़ हमें कन्वे करता है। तो आपस में जो एक म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, वो भी हम लोग मेंटेन करते हैं अपनी सिस्टर एजेंसीज के साथ। इन टर्म्स ऑफ वेपन यूजेज, हम लोग क्या वेपन्स यूज करते हैं?
ऑन अ डेली बेस इन टर्म्स ऑफ जो पेट्रोलिंग रहता है या कॉम्बैट्स के लिए अलग होते हैं, उसके अगर तो आप थोड़े बहुत बता सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो अगर मैं आपको बोलूँ कि डेली बेसिस पे कॉमनली जो वेपन्स यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ इंसास एंड AK, जिसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ है और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है बेसिकली। इंसास बीइंग मेड इन इंडिया इटसेल्फ, दैट इज़। एक नंबर फायरर एस लॉक से लाइन पोजीशन से फायर करेंगे। 2 नंबर फायरर AK-47 से रीलिंग पोजीशन से फायर करेंगे। नंबर 3 फायरर हाई रीलिंग पोजीशन से फायर करेंगे। नंबर 4 फायरर AK-47 से स्टैंडिंग पोजीशन से फायर करेंगे। फायरर पीछे पुड़। जैसा कि आपने सुना अभी जो इंस्ट्रक्शंस इनको दिए गए, तो कैसे एक जवान अलग अलग पोजीशन में फायर करता है, सिचुएशन आती है। जैसे आप देखिए पहला जो जवान है वो लाइंग पोजीशन में है, दूसरा तीसरा नीलिंग में, और जो आखिरी जवान आप देख पा रहे हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो कई सारे डेमोन्स्ट्रेशंस देखें, इट्स पार्ट ऑफ अ जवान्स लाइफ, डिफिकल्टीज आल्सो हैज बीन शोकेस्ड। फायरिंग की अगर बात करें, एक कहा जाता है कि फॉर द इंडियन सोल्जर रेस्ट्रेंट इज द फर्स्ट थिंग। रेस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बारे में दैट फिलॉसफी ऑफ रेस्ट्रेंट इन हमारे जवान्स में जो इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फोर्सेस का, स्पेशली जवान की फायरिंग के बारे में कहा जाता है एक गोली एक दुश्मन। माना यह जाता है कि एक गोली जो आपको मिली है वो दुश्मन किल हो जाना चाहिए उसमें। तो इनको इतनी प्रैक्टिस दी जाती है, और आजकल साइंटिफिकली हम लोग इनको ऐसे कुछ मॉड्यूल्स के ऊपर भी प्रैक्टिस दी जाती है ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, जो इनकी फायरिंग की जो एफिशिएंसी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और ये इतनी एक्यूरेसी के साथ फायर कर पाते हैं कि टारगेट अगर एक बार इन्होंने एंगेज कर लिया, कहीं कोई मिलिटेंट हाइड आउट, कहीं कुछ ऐसा हुआ, तो फिर कोई चांस नहीं है उसको बच के भाग निकलने का इनकी उस दायरे से। तो फायरिंग जो है जवान का एक तरीके से ये इनका मेकअप है, श्रृंगार जिसे बोलते हैं। बिकॉज ये अच्छा नहीं हुआ तो फिर बाकी चीजें पीछे छूट जाएंगी। फिजिकल फिटनेस है, मेंटल स्टैंडिंग है। फायरिंग मतलब एक जवान जो है पूरा एक ओवरऑल पर्सनालिटी है, उसके अंदर ये सारी चीजें छुपी हुई हैं और ये सारी चीजें समाहित हैं उसके अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है कि एक जवान की फायरिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी जब ये फायरिंग के बाद अब टारगेट देखिएगा, हर बड़े आराम से टारगेट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हिट करने में अपने आप को सक्षम पाता है। तो ये खूबसूरत है। तो ये ट्रेनिंग कंपोनेंट जो रहता है जवान के लिए शुरुआत से, कोई फेजेस होती हैं ये ट्रेनिंग की कि ये कैसे किया जाता है? इसमें जैसे अभी बताया था कि जैसे ये इसको हम एनुअल रेंज क्लासिफिकेशन फायर ARCF बोलते हैं। एक जवान को मतलब साल में ये फायरिंग करने होते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा ये फायरिंग रेंज है, तो जरूरी नहीं कि हम साल में एक बार कराएं। हम जैसे जब भी हमें लगता है कि जवान 2-3 महीने फायरिंग से दूर रह लिया है, तो चाहे हम कम राउंड फायर कराएं, 5-5, 7-7 राउंड फायर कराएं उसको, बट उसकी जो एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम वो फायरिंग का उसको एक एक्सपोजर देते रहते हैं, जिससे उसकी ये जो एक्यूमेन है वो एक तरीके से मेंटेन रहता है। और इसमें इसके अलावा फायरिंग के अलावा भी इसकी कुछ ड्राई रिहर्सल्स, ड्राई ड्रिल्स बोलते हैं जिनको हम लोग, जिसको मस्केटरी वगैरह हम लोग बोलते हैं। मतलब आपकी जो, बिकॉज फायरिंग अकेला अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता। जी, अभी ये टारगेट चेकिंग के लिए जा रहे हैं जिन्होंने फायर किया है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी फायरिंग के लिए आपकी पूरी बॉडी को, एक तरह की शरीर को, एक एक मसल को, उसको पूरी तरह से परफेक्ट होना होता है। तो उसके लिए मस्केटरी वगैरह हम लोग कराते हैं, ताकि इनकी जो मसल पावर है और एक जो जिसे न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कि जो दिमाग कह रहा है जो वही बॉडी आपकी करके दिखा भी दे, तो वो सब चीजें बनाने के लिए सारी एक्सरसाइज चलती रहती है। एक ऑन अ लाइटर नोट ये सवाल करना चाहूंगा आपसे कि आप लोग कितने डिफिकल्ट होते हैं जवान के ऊपर जब अगर टारगेट्स मिस होता है? दैट्स अ लाइटर नोट पे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रेशर में उनको ये चीज ये डिलीवर करना होता हो, तो कभी कभी निशाना चूक सकता है। बट हाउ हार्श कैन यू बी? देखो, दिल से तो कभी हार्श नहीं होंगे जो मेरा जवान है। हाँ, लेकिन बीइंग ए कमांडर
ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर इसने फायर ठीक नहीं किया तो मैं अभी उसको बोल सकता हूँ फ्रंट रोल शुरू कर। हमारा एक फ्रंट रोल होता है। ये छोटी छोटी सजाएं होती हैं, बड़ी प्यारी सजाएं होती हैं। इनसे बंदे का जोश बढ़ता है। ये सजा नहीं है बेसिकली, इसको वी कैन नॉट से सजा ट्रेडिशन माना जाता है। ट्रेडिशन में अच्छा फायर ठीक नहीं हुआ, फ्रंट रोल शुरू कर। तो मतलब ये प्यार से करने वाली बातें हैं, ये कोई सजा नहीं होती। बट हाँ, इनको खुद ही पता होता है कि हम अच्छा फायर करना है, हमें एक अच्छा रिजल्ट देना होता है। तो ये जनरली ऐसी स्थिति आती नहीं है कभी हमें किसी को सजा का कोई मतलब नहीं, फौज में सजा का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। आगे बढ़ के थोड़ा जी प्लीज, ये कम आइए आप दिखाते हैं आपको। जैसे रावत जी जा रहे हैं आगे वो टारगेट देखने के लिए, और ये जो है बेसिकली हमारे मिनीचर फायरिंग रेंज है। तो हालांकि काफी डिस्टेंस से भी हमें कई बार फायर कराने होते हैं। ये तो हमने यहाँ से बटालियन के नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। नहीं, फायर तो सबको करना होता है, हर बटालियन को करना होता है। लेकिन ये जो फायरिंग रेंज है, ये फायरिंग रेंज जनरली सब बटालियन के पास तो नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी हाँ, जैसे ये फिगर 11 टारगेट, मतलब ये माना जाता है कि खड़ा हुआ एक जवान, कोई दुश्मन है जिसकी ये राइफल है। तो अभी जवान ने देखिए 2 इंच के अंदर ये 5 गोलियां मार दी हैं। थोड़ा सा हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये 5 गोलियां मैक्सिमम 2 इंच के अंदर में इन्होंने जवान ने इसको फायर किया है। तो दिस शोज द एक्यूरेसी, द एक्यूमेन ऑफ फायरर। तो इस पे ये लगातार काम करते रहते हैं। कमियां भी होती है कई बार, जैसे नहीं फायरर ठीक काम करो। यही इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि अगर फर्स्ट गनर वुड बी टारगेटिंग दिस। या वो एक्चुअली आप जो देख रहे थे वहां पे इन्होंने अलग अलग पोजीशंस बताई थी। पहला फायरर क्या था, जैसे इतनी पोजीशन से हम लोग फायर कर सकते हैं। पहला फायरर लाइंग पोजीशन में था। सेकंड जो फायरर था वो थोड़ा नीलिंग में था, फिर एक सेकंड हाई नीलिंग में था। लास्ट फायरर ही वाज इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये बेसिकली पोजीशंस हो सकती हैं जब अगर आपको आपकी मुदाखलत होगी किसी दुश्मन के साथ में, तो इन्हीं पोजीशन से आपको फायर करना पड़ता है। क्या इंस्ट्रक्शन थे सर ये वाले? मतलब इंस्ट्रक्शन तो ये है कि ये मतलब ये किलिंग एरिया है, ये जवान का एक वाइटल पोर्शन है किसी भी दुश्मन का। तो अगर यहाँ हिट कर रही तो ये माना जाएगा कि दुश्मन मारा गया। तो इसमें हिट करना होता है किसी भी जवान को। और ये आखिरी वाला सेम टारगेट है, इसी में देख सकते हैं इन्होंने भी जवान ने बड़ा अच्छा हिट किया है। ये 4 गोली यहाँ ये पुलिस ने हिट किया है, ये 5 है। तो ये ठीक है, बट इसमें अभी और भी इसको थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। अब हम इसमें ये करते हैं, जैसे जो जवान थोड़ा कमजोर होते हैं फायरिंग में, तो उनको फिर हम अलग से थोड़ी सी और मस्कटरी वगैरह देके और ट्रेनिंग देके ज्यादा फायर करवा के उनके एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं हम लोग। तो ज्यादातर अच्छे फायरर हैं, बट अगर कोई कमी है तो होती है थोड़ा बहुत, अगर नहीं है तो उसको सुधारा जाता है फिर ट्रेनिंग के माध्यम से। पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस जो रहता है, इसीलिए ट्रेनिंग कराई जाती है। और ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। और ये ट्रेनिंग के आप अगर कहें कि जो नए जवान आते हैं आपके, तो इज इट पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि किस तरह से उनको फायरिंग के लेसन्स दिए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब जैसा बड़ा सा क्वेश्चन, जब बेसिक ट्रेनिंग करके जब जवान आ रहा है तो उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, बिकॉज वो जस्ट सीखा ही होता है। तो फिर और हमारे ऊपर जब हमारी यूनिट में तो फिर जवाबदारी और हमारी रहती है कि हम उसको एक स्किल्ड फायरर बनाना होता है, एक उसकी ट्रेनिंग को और शाइन करना होता है, फायरिंग जो एक्यूमेन है उसको और शाइन करना होता है। तो उसके लिए फिर हम जो मैंने आपको बताया था कि जो आउटडोर क्लासेस हमारी होती हैं पर डे, उनमें एक मतलब मॉक एक्सरसाइजेज भी फायरिंग की जो होती हैं उनको हम उनसे करवाते हैं, ताकि जवान जो है वो मतलब और फायरिंग को अपना अच्छा कर सके। अच्छा। और फिर ये चलती रहती है बीच बीच में, मतलब फायरिंग कराते रहते हैं, तो उससे वो मतलब अपना उसको काफी इंप्रूव कर पाता है। So there you've seen various aspects of what goes into the life of a Jawan and what entails the training process. And what we have seen is just barely about a percentage of what they would call their hardcore training, but it's just a glimpse of how things go about in the life of a Jawan here in the valley especially. Let's not forget that we are talking about an area which is right in the heart of what was once considered the hotbed of terrorism. In fact, there are several other aspects also in terms of the cordon and search operations. There are, the hutments that you see on the right-hand side is also, they're essentially developed for that kind of training. But this is what goes into the life of a Jawan here at the CRPF camp. We've got you a closer glimpse. In a short while from now, there's much more lined up for you. At 6 p.m. tonight, we'll get you
the other side of the Jawan. How do they celebrate? How do they relax? Because let's not forget, when they are here, they do not have their family members with them, but they still find ways to be together, ways to be happy. And we're going to get that glimpse tonight at 6 p.m. Join me for This Is Exclusive from this very camp to see the other side of a Jawan's life. Right. All right. Let's thank you, Shaman, for getting us all the details. Shaman is reporting live from the CRPF radar station in Bargaon. Shaman, getting us top updates on this very special day. It's Republic Day. Viewers, today, a short while back, we saw that amazing Republic Day parade where we saw the military strength. And it's just sort of about military strength. We saw Nari Shakti on display as well. Nari Shakti on display, viewers. In fact, we also had a conversation with the lady officer who led the IAF contingent. Let's play that out. Very, very special guest, and it's an absolute privilege and an honor to welcome on this special broadcast Squadron Leader Sindhu Reddy, who's joining us. She's this young lady in uniform that you see on our screens. Welcome to the broadcast, and welcome to our series, Squadron Leader Sindhu. Thank you so much. So, ma'am, why we are having this conversation is not just because of the tremendous feat you've achieved, your journey, your milestones that you've crossed from wherever this entire journey to reach where you are today, because this time around it's going to be your second Republic Day parade and you will be leading the Indian Air Force's marching contingent. And like I said, this entire thing only, listening to this gives us goosebumps, and you'll be there, you'll be leading the entire contingent. How was it when you were told that you're going to be doing this Squadron Leader Sindhu? What was your first reaction like, and what are your preparations? This moment gives me goosebumps as well, but I've always seen myself doing this at some point in my life. When I was in NCC back in my childhood, I've always imagined myself marching the Rajpath then, and marching in front of our Supreme Commander. And when I joined the Air Force, I knew that I would bag this opportunity one day or the other where I can lead the contingent. And today, being here and standing in front of the contingent, leading them, representing the Air Force, has been a moment of real honor, and I'm really proud to be where I am. And it has been a wonderful experience so far, and I've gained a lot standing where I am today, and I'm really happy about this. Squadron Leader Sindhu, you're making it sound so simple, but all of us, who see this glued to the television screens, we know that, everything is so perfect, and this cannot happen without the tremendous amount of hard work that all of you, everyone participating in the parade really puts in. And for you to reach where you've reached, please don't tell us that this has been an easy journey, but we would like to know, how did you reach this far from, it's like your childhood dream. You said that you always wanted to be flying, and when you got to know that the Indian Air Force also you can come and fly, you just latched on to that opportunity. As a child, I used to attend the Aero India show back in Bangalore, which used to happen every other year. And I used to see aircraft flying, especially the Sarang and the Surya Kiran. And I drew inspiration from there that I have to fly, and I have to fly for the Indian Air Force. And after I joined the NCC, and the amount of patriotism I developed over a period of time made it very sure for me of what path I wanted to choose. And joining the Air Force
has been sprouted since then. When I finally got selected to be part of the Air Force in the flying branch, it was a moment of true accomplishment for me, and it gave me like immense pleasure for the same. And when I started flying, and I started flying helicopters for once, it was an amazing experience, and it actually took me out of the world. So being from flying helicopters to coming here, standing in Kartavya Path and leading the contingent, it has been a truly remarkable journey for myself. Because after flying the helicopters, I always wanted to accomplish my dream that I had since childhood. So that is when I decided I will represent the parade one day. And when I got this opportunity about 2 months back, I immediately grabbed it. And it was a really tough training that I had for 2 months, though I considered myself that I'm fit. But the training that we had for the last 2 months has been really grueling. Irrespective of that, irrespective of all the hardships that we faced, I am happy to have got the opportunity to represent the Air Force and to lead the marching contingent this time at the Kartavya Path. All right, viewers, so right now we are seeing that India's visionaries, India's leaders, youth icons of India, they are speaking on Republic TV, and this is not all. In fact, Devendra Jhajaria will be joining us soon. He's a multi-time Paralympics medal winner. He's also the first para-athlete to receive the Padma Bhushan. He'll be joining us live shortly, but first, let's have a look at all his achievements and his inspiring story. Third round. Raising the Indian flag high on the international platform, Indian javelin thrower Devendra Jhajaria is a multiple-time Paralympics medal winner. 12 years from his Athens gold. He may have lost his hand at the age of 9, but he never lost his determination. It's gone well beyond 62 meters.